Okay, hello guys. Okay, okay, okay. So I can see all the technicals. Okay, so all the technicals are working fine. Okay, good, good, good. Okay, good evening, everyone. So, guys, let me tell you the plan for today's session. What we plan to do in this session. See, so guys, this is basically a grammar session, and the format for today's session is going to be different from the sessions that we have had. Okay, so आज देखो अपन क्या करने वाले हैं. What we are planning to do. I will pick up one question. Okay, we look at that question, we try to solve that question. Once we have solved that question, we look at the concept. Okay, so in this way, we are going to cover the concepts of nouns. We are going to look at concepts of articles. We are also going to look at some concepts of pronouns. Then we also look at some concepts of conjunctions. Okay, and prepositions. And the way that I've structured the session is such that we cover almost all important concepts. Okay, whatever I felt could be covered in like 2 hours a session. And there's this one separate session that we have on tenses. So उस वाले session में we cover the tenses वाला part, right? So a lot of people had this concern ki how we go about doing the concepts of grammar, like what should be the best way. Okay, so guys, what I feel is that one of the very interesting things that we can do is that obviously we can go through the questions. We try to solve the questions, and once we are done with the question, we look at the concept, we look at the rule or concept of whatever it is, and whatever doubts you have, okay, and then I can look at the chat and you can tell me if you have any questions, if you have any queries, if you have any doubts. Okay, okay. So guys, that is how it's going to happen. And chalo, so let's get started. Okay, so guys, this is what my profile is. My name is Himanshu. I have an MA and MPhil in English literature. I've been teaching for the last 10 years, and I had a 99.74 percentile in the CAT verbal section. Okay, so this is what the agenda is. We discuss the grammar topics for the OMATs. We look at the questions, and then once the question is done, we look at the concept. Okay, the question करेंगे, then we move on to the concepts. Okay, so guys, I hope you are following us on the YouTube channel and our Telegram channel. So guys, this is one message that you can use for some of you, or otherwise, those of you who are planning for only CAT 2020 can ask anyone you know. Okay, any of your acquaintances or any of your friends. Okay, so anyone who's preparing uh, for your CAT 2021. Okay, so you can use this code. Okay, this is the code HSING, and once you use this code on the 1 year subscription, the pricing goes down from 17,500 to 15,750. Okay, so that becomes a 10% ka discount. Okay, so guys, those of you who have not downloaded the app and are not following me on the app, okay, can download the app. You can use this code also to get that referral. Like, this is basically the referral code. Also, it will give you access to all the free content that I have on the app. Okay, so guys, today I had a vocab session, so you can have a look at that session as well. Yesterday I posted a video on article, so you can have a look at that session as well. So आप में से कई लोगों का क्वेश्चन था कि यार वो जो वीडियोस है कैसे एक्सेस करना है, तो यू कैन ऑलवेज यूज दिस रेफरल कोड. अदरवाइज यू कैन सजेस्ट सम ऑफ योर फ्रेंड्स हु आर प्लानिंग टू गेट कैट 2021. ठीक है, एंड ऑब्वियसली इट्स गोइंग टू हेल्प मी इन सम वे. ठीक है, सो अगर आपका कोई फ्रेंड है जो दे रहा है, ऑब्वियसली आप लोग नहीं दे रहे, तो कोई बात नहीं, आप अपने फ्रेंड्स को सजेस्ट कर सकते हो एंड दे कैन यूज दिस कोड. Otherwise, you can use this code after you download the app and like you use it in the referral section. Okay, so guys, okay, so let's get started. And like few things. Obviously, you can see the question on the screen. Before we get started with the session, few things, and then we can get into the groove. Okay, so one question that a lot of people had was that, sir, what should be a plan for grammar? Now, this is one thing that I can suggest. Obviously, you people are doing something from your own side, right? Okay, my purpose would be that I will be sharing some of the content that I think is important. Okay, because whatever content I pick would be the content that I felt was relevant. Okay, and every day we are going to have around 2 hours ka session. 2 hours, as in like it may be on the app, it may be on the YouTube. So guys, if you're not following me on the app, you can follow me in the app also. ठीक है, so मुझे लगता है कि यार 2 hours अगर आप ग्रामर को दे रहे हो तो वो काफी है. ठीक है, and yes, I would obviously say that you do anything that you want to do from your own side. Okay, but then even attending these sessions will cover a lot of ground. Okay, so that is something that's going to be really helpful for you. So आप में से जो लोग अभी consistently follow नहीं कर रहे, ठीक है, till now I've put 2 sessions. ठीक है, तो वो आप sessions देखो, and obviously you follow me in the upcoming sessions as well. Okay, so that's how it is.
तो गाइस स्टार्ट करते हैं. On the screen you have the question. You try answering the question. I would look at the responses and then we move on to the concept. Okay. So hello Shreyansh, hello Vatsal, hello Lokendra, hello Aman, hello Dhruv. Okay, so guys देखो क्वेश्चन को और मुझे बताओ कि भाई क्या आंसर यहाँ पे होना चाहिए. Okay, have a look and I would just refresh the chat. Okay, so I can see some answers. Vatsal says B option. Soumya Goel says A option. Bhavika says A option. Utkarsh Kalra says A option. Vatsal B option. Okay, Siddhi Khandelwal says B option. So guys, I can see that most people are answering A option. Okay, so ज़्यादातर maximum people, most people are going in for A option. Okay, so good enough. Okay, guys, anyone else? Last 10 seconds and then I pick up the like I discuss the answer. Okay, Siddhi Khandelwal says B option. Okay. Vatsal says B option. Lokendra says B option. Okay. ओके. ठीक है. तो देखो आज ना जो जो मेन चीज रहेगी वो ये दैट वंस वी आर डन विद द क्वेश्चन वी आल्सो लुक एट द कंसेप्ट. सो यू विल नॉट हैव दिस प्रॉब्लम दैट ओके वी डिड वन क्वेश्चन, वी विल एक्चुअली लुक एट द कंसेप्ट आल्सो. सो गाइस, दोज ऑफ यू हु हैव आंसर्ड द बी ऑप्शन इज द दैट इज द राइट आंसर. सो लेट मी टेल यू हु हैज आंसर्ड द क्वेश्चन करेक्टली. वत्सल हैज गिवन द करेक्ट आंसर. Then you have Siddhi Khandelwal who has given the correct answer. Lokendra Rathod has given the correct answer. So yaar kya reason hai? What is the reason why B option is the answer? So let me tell you this. Guys, look at this. The word is equipments. Okay. Now yesterday we were discussing this concept of some words like stationery. Okay, we had this word scenery. And then I said that these words are general terms to depict a certain type of things. And then I also mentioned that all these are abstract, uncountable nouns. ठीक है. तो यार ये चीज बहुत इंपॉर्टेंट है. ये एब्स्ट्रैक्ट नाउंस जो है ना ये बहुत कंफ्यूज करने वाले हैं बिकॉज वट एवर एब्स्ट्रैक्ट और मटेरियल नाउंस यू डील विद these all nouns are going to be uncountable guys, to have to keep this thing in mind. अभी मैं आपको ना एक लिस्ट दिखा रहा हूँ. Just have a good look at this list. Okay, just guys have a good look at this list. You can take a screenshot if you want. Okay, so this is the how the list looks like. देखो, you have the first word scenery. Okay, now scenery is a general term that we use for a certain environment, trees, plants, rivers, etc. Scenery in itself has no existence. ठीक है, तो यार सीनरी का ना खुद का कोई एग्जिस्टेंस नहीं होता. इट्स अ जनरल टर्म दैट वी यूज टू डिपिक्ट अ सर्टेन टाइप ऑफ सिचुएशन. इट्स एन एब्स्ट्रैक्ट नाउन. पोएट्री, ओके, इट्स एन एब्स्ट्रैक्ट नाउन. फर्नीचर, कल मैं बात क्या कर रहा था आपसे. यू कैन नेवर से वन फर्नीचर. पता है क्यों? बिकॉज फर्नीचर जो वर्ड है ना वो काउंटेबल ही नहीं है. सो देयर इज नथिंग लाइक वन फर्नीचर. यू कैन ऑलवेज से वन आर्टिकल ऑफ फर्नीचर, यू कैन ऑलवेज से वन पीस ऑफ फर्नीचर, बट यू कैन नेवर से वन फर्नीचर. एंड लेट मी टेल यू गाइस दैट फर्नीचर is nothing. Okay, you always have chairs that are countable, you have tables that are countable. Okay, but you can never count furniture because furniture is nothing but a general term that we use for a type of things, and these general terms are technically uncountable. Advice, information, hair, mischief, bread, these are all uncountable. सारे abstract नहीं है लेकिन uncountable है. अब देखो bread का क्या फंडा है. bread का फंडा ये है that it's a material noun. Now, this is something that you need to keep in mind when you say bread. Bread is just the raw material. What you make from the bread are the slices of bread or the loaves of bread. So, guys, ये जो bread होती है, that is the starting thing. Okay, so that's the non-discrete part. Once you cut it into slices, it becomes discrete. ठीक है. अभी जो कट करते हो आप स्लाइसेस में, लोफ जो आप लेते हो वो काउंटेबल होता है. ब्रेड इन इटसेल्फ इज नॉट काउंटेबल. ओके, कीप दैट थिंग इन माइंड. स्टेशनरी, again a general term, it's a concept. Okay, stationery, like you have pen, pencil, rubber, sharpener, etc. So stationery in itself is not countable, right? Stationery is a general term that talks about a type of things. ठीक है, तो उसमें पेंसिल आ गया, शार्पनर आ गया, सब कुछ आ गया. ठीक है, वो काउंटेबल है. लेकिन स्टेशनरी खुद एक कंसेप्ट है. ठीक है, तो वो आपका काउंटेबल नहीं है. ठीक है. Then you have equipment. Equipment is again a general term. Okay, again not countable. Work is again uncountable. Work is obviously a abstract noun. Jewelry, jewelry guys again is a term that is uncountable because when I say jewelry में you have different types of articles of jewelry. Those articles are countable, but jewelry खुद अपने आप में क्या है. Jewelry is just a general term that talks about type of ornaments. ठीक है, so you have different types of ornaments. Okay, so jewelry in itself is uncountable. Knowledge is uncountable, very obviously it's an abstract noun. Wastage is uncountable. Okay, postage is uncountable. Postage refers to the duty that is applied. Okay, so that is uncountable. Crockery is uncountable. Okay, luggage is uncountable, and cost is uncountable. Okay, so whatever terms you can see on the screen, they are all uncountable. Okay, they are either abstract or material.
and we saw that a lot of these terms are also concepts. Okay, so they are uncountable. Okay, so let's move on to the next question. I hope you got this. ठीक है वत्सल यस पेपर वेदर ठीक है ओके बट पेपर वेदर मैं डिस्कस कर लिया था मैंने और भी होते हैं सोप होता है ठीक है सोप आपका मटेरियल नाउन है ठीक है पेपर आपका मटेरियल नाउन है ब्रेड आपका मटेरियल नाउन है ठीक है इवन इवन ब्रिक इज अ मटेरियल नाउन व्हेन यू यूज इट एज अ पार्ट ऑफ अ बिगर स्ट्रक्चर ठीक है तो यार ये मटेरियल नाउन्स एंड एब्स्ट्रैक्ट नाउन्स यू हैव टू कीप इन माइंड वेरी इंपॉर्टेंट okay so let's come to the next question so guys that was the concept of nouns coming to the next okay so you have this question on screen. The question is a series of lectures were delivered by the guest speaker. A series of lectures, a series of lectures were delivered by the guest speaker. Okay, so A, B, C, D, four options are given. What should be the correct answer? Okay, Vatsal says B option. Okay, guys, what should be the answer? A series of lectures were delivered. Soumya says B option. Siddhi Khandelwal says B option. Okay. Lokendra says A option. Okay, anyone else who would like to answer this question? 30 seconds. Bhavika Chandwani says A option. Okay. Mango Pineapple says A option. Shriyansh Jangit says A option. ठीक है. चलो. Good, 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 good. Okay. So let me tell you the answer. So guys, I think a lot of confusion happened because some of you thought that the subject in this sentence is lectures. So this is how we solve this question. This series is the subject. What you have in the off construction is nothing but description of the subject. तो तुम्हें ना एक चीज समझनी है. When I say a class of students, now off part is just description. What is the subject? The subject is a class. Off construction mein whatever you have is a description of the real subject, that is class. So what you have here, a series of lectures were delivered. So now guys, the subject is series. It's not the lectures that is the subject because lectures is description of what series is all about. Right. So series आपका subject नहीं है, series आपका subject है. Now series is a singular noun. Now series is a singular noun. Just like innings is a singular noun. Innings is a singular noun. Series is also a singular noun. अब series देखो क्या होती है. You have a lot of things and then you form the sequence of those things. That sequence of something is called as series. ठीक है. तो obviously series जो है वो एक single sequence को depict कर रही है. ठीक है. So यहाँ पे a series is basically singular and you can obviously see that I've used article a. So that means it's one. It's like it's referring to one series. Okay. So this series is singular and that is why the answer is was. It should be a series of lectures was delivered. A series of lectures was delivered. So guys, this is subject of agreement ka question and this is the subject. Series as a noun is singular noun. Now these are the nouns that can confuse you. Okay, what you see on the screen. Okay, so if you look at these nouns, okay. लेकिन चलो अभी एक क्वेश्चन और कर लेते हैं उसके बाद फिर मैं कंसेप्ट पे आता हूँ. Have a look at this question. A summons has been issued to him by the court. Okay, in the previous question, series was singular, and that was the reason why the verb has to be like changed to was. And have a look at this question. इसमें क्या लगता है? What do you think? Okay, so I am looking at the chat. Siddhi Khandelwal say A option होना चाहिए. Okay, okay. So you think that summons is wrong, right? Okay, Siddhi says A option. Lokendra says A option. Puneet says A option. Vatsal Chaudhary says A option. Okay, Bhavika says Soumya says D option. Okay, Soumya says D option. Bhavika says A option. Okay, so guys, all of you have got this question wrong, and only one person has got this right, and that is Soumya Goel. Okay, so guys, Soumya Goel has done this question correctly, and rest of you have got this wrong. Now I'm going to show you a list of all those words that you have to keep in mind while you deal with such questions based on nouns. ठीक है, तो एक बार तो कंसेप्ट की बात कर लेते हैं कि यहाँ पे बेसिकली क्या फंडा चल रहा है. ओके, सो लेट मी एक्सप्लेन दिस. ओके, फर्स्ट ऑफ ऑल, what is issued by the court is summons. Summons is singular and the plural of the word summons is the word summonses. Okay, this is plural. So what court issues is not summon. What court issues is summons. Okay, so a lot of you are confused that what is the actual word. जो documents या जो आपके court issue करता है, that are summons. The plural is summonses. Okay, so it's a countable noun, guys. Okay, summons is singular, summonses is plural.
Okay, there is no English word like summon. Now summon is a verb. Now we can always use summon as a verb. For example, I can say uh, I summon him every day. I summon him every day. So guys, you can see this that the word summon exists in English, but ये verb है यार. Okay, summon is a verb. Okay, it's a plural verb. Okay, the noun form is summons. Okay, there's only one form, summons, and then you have the plural of summons, and that is summonses. Okay, so that is what the question is all about. So you can see this sentence is perfectly okay because I'm using indefinite article. और हमें पता है कि indefinite article कहाँ use होता है. Indefinite articles are used with something that is one. Okay, because indefinite article is weaker form of one. So when I say a summons means one summon. Okay, one summons. Okay, so this article is perfectly okay. Okay, this sentence is perfectly okay. ठीक है, the answer is no error. ठीक है, अभी क्या है ना कि हमारी टेंडेंसी हो जाती है कि हम लोग ना नाउन्स का एरर अभी चल रहा है ट्रेंड में, तो उसको नाउन के हिसाब से उसको ए को मार्क कर दिया. ठीक है, तो ऐसे नहीं करना है. ओके, देयर आर सम क्वेश्चंस व्हिच कैन हैव नो एरर. So guys, summons is perfectly okay. This word is singular, though it might look as if it's plural, but then it's actually singular. Now, this is the list of words that you have to pay attention to. Okay, I'm going to show it on the upcoming, like on the next screen. इन वर्ड्स को ना बहुत ध्यान से नोटिस करना, ठीक है, बहुत ध्यान से, because these are the words that will catch you in the actual exam. Okay, just have a look at these words. I'm going to explain. If you have any question, you can ask me. Okay, look at this. Ethics. The word ends with S, but it's singular. Innings. It ends with S, but it's singular. Okay. Billiards, crickets, economics, physics, politics, summons. Okay, singular है भाई. Summons is a singular noun. Okay, mathematics, measles, mumps. Okay, so whatever terms that you see on the screen, they all end with S. Okay, they all end with S, but then all these terms are technically singular. Okay, so just because a certain term ends with S, it does not mean that the term is plural. Okay, these terms are actually singular. Okay, and obviously because they are singular terms, I use singular verb with these. Okay, I have to use singular verb with these. Okay, so singular verb use करना है, so they are all singular. Okay. So a lot of us are confused. ठीक है. अच्छा, इनके ना कुछ वर्जन्स होते हैं इन वर्ड्स के जो एक अलग मीनिंग कैरी करते हैं जब ये प्लूरल बन जाते हैं. अदरवाइज इन वर्ड्स का जो प्राइमरी मीनिंग है ना वो तो सिंगुलर ही है. ठीक है, अभी एक्सेप्शंस की मैं कुछ बात करता हूँ. ठीक है, लेट मी टॉक अबाउट एक्सेप्शंस एज वेल. ठीक है, सो लेट मी गिव यू वन क्वेश्चन ऑफ एक्सेप्शन. ठीक है, क्योंकि अभी माइंड में क्वेश्चन आएगा कि थोड़ा सा टफ क्वेश्चन बन गया तो कैसे बन सकता है, एक्सेप्शंस पे बन सकता है. लेट मी गिव यू वन क्वेश्चन. फॉर एग्जाम्पल इफ आई से the economics of this project are beyond me. The economics of this project are beyond me. So guys, if you look at this sentence, okay, again the option is no error. So this sentence is also correct. But the meaning of economics is not the meaning that we know. Okay, it's not referring to the economic activity, or if it's not even referring to the subject. The meaning of the word economics here simply is the calculations or the calculations of the project. Okay, so अगर मैं कह रहा हूँ कि यार इस प्रोजेक्ट के कैलकुलेशंस मेरे बियॉन्ड है, ठीक है, तो इसका मीनिंग ये हुआ कि आपको उस प्रोजेक्ट के अंदर फायदा नुकसान या उसके कैलकुलेशन समझ में नहीं आ रहे. लाइक यू डोंट थिंक दैट यू कैन मेक मनी इन दिस प्रोजेक्ट. ओके, सो इकोनॉमिक्स ऑफ अ प्रोजेक्ट और इकोनॉमिक्स of a certain proposal, that means the calculations involved, the profit and loss, okay, the sort of transactions that you think are going to happen. Okay, similarly politics also has one more meaning. If I say his politics are antithetical to mine, that means his political views are antithetical to mine. Okay, so just keep that thing in mind that some of these words can have multiple meanings, but mota mota these words are singular. That's the point. Okay, so coming to the previous two questions, okay, you can see summons is singular, so perfectly okay, no error in this sentence. And this was the one that I did pehle. Okay, so series and innings are also singular. So when I say series is also singular. So the sentence ka answer is B option. Okay, so I think you understood both the questions and you also captured the concept. Okay, and obviously you have all these words; they are always singular. Okay, in their primary meaning, they are all singular. Okay. Chalo. So moving on to the next question. Okay, so guys, again an easy one. He's an alumni of Delhi University. Then the option says no error. Quickly tell me what should be the answer.
Is this a correct sentence? Correct है क्या? Or is there something wrong? Quickly guys, 30 seconds, only 30 seconds, and then I tell you the answer. जल्दी 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 आंसर बताओ भाई. ठीक है, वत्सल सेज बी ऑप्शन होगा. ओके ओके गाइस, वत्सल बी ऑप्शन. ठीक है, क्या आंसर होना चाहिए भाई? यार ये तो इजी क्वेश्चन पूछ लिया मैंने, काफी इजी है. जल्दी जल्दी बताओ. सी ऑप्शन. ओके, सिद्धि खंडेलवाल से सी ऑप्शन. श्रेयांश सेज ए ऑप्शन. वत्सल. ओके वत्सल यार आंसर मत लिखो यार ऐसे. ठीक है, डोंट राइट आउट द आंसर, जस्ट लाइक जस्ट पुट द ऑप्शन. ओके, जस्ट पुट द ऑप्शन. चंचल says B option, Lokendra says D option, Bhavika Chandwani says B option, SS says A option, Soumya Goel says D option. Okay, so guys, very surprisingly, I thought that this is a very cliched question. I thought that most people would know this, but यार यहाँ पे ना काफी लोगों ने गलत भी किया है ऐसे. ठीक है, so let me tell you the idea. See guys, alumni is a word that is grammar-wise plural. Now you can have two singular versions. Now if you talk about a pass out from a certain college, a person who has done his education from a certain college, and the person you're referring to is a male, then you call that person alumnus. So alumnus is male and singular. And if you're referring to a female, okay, that is alumna. Now alumni is grammatically speaking the plural of alumnus, because for the plural of the female alumna, okay, if you have a plural version, अभी मेरे पास बहुत सारे फीमेल्स हैं जो किसी पर्टिकुलर कॉलेज से पास आउट है. आई वुड कॉल देम एलुमने. ALUMNAE. ठीक है. नाउ if you have one person male, alumnus. If you have one person female, alumna. If you have plural, that is alumni. Some books believe that alumni is only applicable when you pluralize the male pass outs. Okay, and like according to them, alumni is basically the plural for the female pass outs from a certain college or institution. ठीक है, बाकी तुम देख लेना, alumni plural होता है. ठीक है, और ये दोनों वर्ड्स आपके सिंगुलर हैं, तो यहाँ पे आपका सिंगुलर ऑप्शन आएगा, बिकॉज आर्टिकल यू कैन सी दैट आई हैव यूज्ड अ indefinite article. Indefinite articles are used with singular countable nouns guys. Singular countable noun ये है नहीं, ये plural noun है. So answer is B option. Okay, which I think many of you have already answered. Okay, so Roma Sena, I think you have understood. बहुत से लोगों ने D option मार्क किया. वैसे ना यार ये बड़ा क्लीशेड क्वेश्चन था, बहुत कॉमन क्वेश्चन था, एंड द रीजन गाइस आई एम पिकिंग अप वेरी बेसिक क्वेश्चंस इज बिकॉज दैट इज एग्जैक्टली व्हाट ओमेट्स आर ऑल अबाउट. ठीक है, तो इफ समवन इज थिंकिंग कि यार काफी बेसिक क्वेश्चंस है, तो गाइस मैं क्लियर कर देता हूँ. The funda of omets is whether you're writing snap and mat, whether you're or you're planning to write other omets will give you very normal questions, but then you will be expected to do them very quickly. Okay, and every question that you see will always involve one concept. ठीक है, एंड आई हैव ऑलरेडी सेड स्नैप में यार अपना टारगेट है फुल क्वेश्चंस इंग्लिश में अटेम्प्ट करने हैं. ठीक है, तो फुल क्वेश्चंस तभी अटेम्प्ट होंगे जब क्वेश्चंस का आपका ऐसे क्वेश्चंस आते हैं. ठीक है, सो यू वोंट फाइंड वेरी वेरी कॉम्प्लेक्स क्वेश्चंस इन सिम्बायोसिस, यू वोंट फाइंड वेरी कॉम्प्लेक्स क्वेश्चंस इन एनमैट और फॉर दैट मैटर इवन सीमैट. ठीक है, so this is going to be the level, right? Okay, so guys, coming to the next question, and let's see the answer. Okay, quickly guys, 30 seconds, let's see. Okay, such a natural phenomena. Soumya Goel has answered. Okay, okay, no answer till now. Guys, quickly, जल्दी बताओ क्या आंसर होगा? What should be the answer? Guys, okay, Vatsal says B option होगा. ठीक है. Okay, what happened? जल्दी बताओ. पुनीत B option, विभोर B option, सिद्धि खंडेलवाल B option, वत्सल चौधरी B option, भाविका चंदवानी B option, सौम्या गोयल B option. Okay, so guys, all correct, perfect. Okay, so भैया सबका आंसर सही है. Every person has answered this question correctly. The idea is that when you refer to the singular of the word phenomena, it's phenomenon. ठीक है, ठीक है. Now I'm going to show you a list. See, phenomena is plural, phenomenon is singular. Okay, phenomenon is like one event, one occurrence. ठीक है, for example, if I say like rotate, like revolution of earth around the sun is a natural phenomenon. Okay, you're referring to one. तो एक चीज की बात कर रहे हो आप, you say phenomenon. When you're talking about more than one, it's phenomena. ठीक है, the plural of phenomenon is phenomena. Okay, so now guys, let me show you all those questions that can come in the exam. Just pay notice to this and you can take a screenshot बाद में. Okay, so this is the list. Okay, so these are guys the words that will come in the exam. ठीक है, इनमें से कोई ना कोई वर्ड आता है nouns के अंदर और वो कंफ्यूज कर देता है. ठीक है, so okay, so guys, you can see this. Yes, Priyal Mehta, very good, correct answer.
Okay. So guys, on the left hand side you have the singular, and on the right hand side of the list you have the plural. Okay, so let me take you through this list jaldi se, and if you have any questions you can ask me. So phenomenon is the singular for phenomena. The singular for the plural for stadium is stadia. The plural for radius is radii. The plural for criterion is criteria. Notice the spelling criterion and criteria. The plural for medium is media. Okay, the plural for stratum is strata. For the plural for syllabus is syllabi. देखो ये वाला गड़बड़ हो जाता है because like a lot of times when I say that I've completed all, like I've completed my syllabus of all the subjects. Okay, so it's not syllabus of all subjects, it's syllabi. Okay, because the plural of the word syllabus is syllabi. Cactus, it's cacti. Okay, focus, it's foci. Fungus, fungi. Syllabus, syllabi. Stratum, strata. Bacterium, bacteria. Okay, bacterium, bacteria. Singular is bacterium and the plural is bacteria. Millennium, millennia. Alumnus, alumni. And alumna, and alumni is, that is female. Alumnus is male. The male ka plural is alumni and the female wale ka plural is alumni. And notice the spelling. Okay, so you have this alumni, that is the plural for alumnus. And alumnus refers to a person who is male and pass out from a certain institution or college, and alumni is the plural for the female version. Okay, so that is alumna ka plural. Okay. Okay, so guys, this is one list. You can take a screenshot or you can go through the session. ठीक है, तो उसको consult कर सकते हो आप, and this will actually help you to capture some questions, to get some questions right on the singular plural wala confusion. चलो, okay, I hope समझ में आ गया ये concept. Let's move on to the next question. Okay, so guys, on the screen you have the next question. Okay, Vatsal says C option. Okay, Bhavika C option. Okay, Bhumika Purohit says C option. Okay, okay, Soumya says C option. Lokendra says C option. Okay, SS says C option. Siddhi Khandelwal says D option. Puneet says C option. Okay, so guys, let me answer this question. I think most of you have got this right. See, the answer to this question is Zia can sing better than me. The answer is that I require a subject case, and the answer is I. And let me explain the reason. Dekho, this is a case of comparison in pronouns. Now, always keep in mind that when it comes to pronouns, there are two pronouns, two types of pronouns. Okay, like you, when it comes to personal pronouns, okay, personal pronouns may you have one pronoun that is called the subject case, which becomes the subject of the sentence, and the other is the object case that becomes the object of the sentence. ठीक है, तो guys यहाँ पे concept है, बहुत important concept है, उसको ध्यान से देना. When you look at such pronouns like I, he, she, they, we, you, it, they, these pronouns become the subject of the sentence. We call them the subject case pronouns. When you look at such pronouns as me, him, her, them, us, and again you have you as well, because you is subject case as well as object case, and it is again subject case as well as object case. So this next category that you have is the pronouns of object case. So this is subject case. Subject case का simply meaning है it becomes the subject of the sentence. Object case means that it comes after the main verb, it becomes the object of the sentence. Now comes the concept. The concept is we can only compare pronouns of similar nature. We can compare pronouns of similar nature. That means subject can be compared to subject case, object case can be compared to object case. Okay. So guys, now come to the question. Zia is the subject of the sentence. Okay, can is the helping verb, sing is the main verb. Okay, now comparison, you can see this word better than, so that means there is a comparison happening. Now what is the rule? We can compare pronouns of similar nature. मतलब ये हुआ कि अगर मुझे nature पता है तो ही मैं compare कर सकता हूँ. Now tell me something. When I look at this part, this me, what am I comparing this me to? किससे compare कर रहा हूँ भाई? I'm comparing me to Zia.
Now, what is the nature of Zia? Zia is actually the subject of the sentence. That means it is subject case. What did I say? I said that similar nature ke pronouns can be compared. That means if the comparison is with the subject of the sentence, then the answer should actually be I, because when the comparison is with the subject of the sentence, the entity with which it is compared, okay, then you have to convert the thing that is being compared, or the pronoun that is being compared to, against subject case. So guys, this becomes Zia can sing better than I. ठीक है, Zia can sing better than I. ठीक है. Now, if you have understood this concept, let me ask you one more question and let's see who can answer that question. ठीक है, अभी ये concept समझ में आया? ठीक है, the reason why I said the answer is I, because I have to convert the object case to subject case. क्यों convert करना है? Because we can compare only similar cases. Similar cases का मतलब ये हुआ कि अगर आप subject के साथ compare कर रहे हो, तो obviously I am comparing it with the subject because Zia is the subject of the sentence. Then the pronoun again has to be converted into the same case का मतलब if you're comparing it with subject, then obviously I have to I have to convert me into I. So that is the answer which I think many of you have answered correctly. जिनका नहीं आया था उनके लिए मैंने समझाया. बहुत बेसिक कंसेप्ट है, बहुत सिंपल कंसेप्ट है. आई होप आपको समझ में आ गया होगा. नाउ लेट मी टेक यू टू समथिंग. शी कैन सिंग बेटर देन मी. यस विभोर, इसके अंदर हो जाएगा शी कैन सिंग बेटर देन आई. ठीक है, शी कैन सिंग बेटर देन आई. ओके, तो ये तो इजी क्वेश्चन था. अब मैं आपको ना इसका एक थोड़ा सा मॉडिफाइड वर्जन बताता हूँ, ठीक है, जो कि एक्चुअली एग्जाम में आ सकता है. ओके, सो गाइस हैव अ लुक एंड आई होप यू हैव अंडरस्टूड दिस. विभोर, तुम्हारा क्वेश्चन आई थिंक मैंने आंसर कर दिया, तो उसमें आई हो जाएगा, शी कैन सिंग बेटर देन आई. ओके. Okay, so guys, now let us look at like a slightly better question. Okay, look at these two cases. If I say Rahul uh, Rahul likes me more than him slash she. ठीक है, look at this sentence, guys. Look at this sentence. ठीक है, अभी कंसेप्ट समझ में आया था लास्ट वाला. ठीक है, एंड ऑल ऑफ यू हैव आंसर्ड द करेक्ट गिवन मी द करेक्ट आंसर कि जिया सब्जेक्ट केस है, तो सब्जेक्ट केस का सब्जेक्ट केस का कंपैरिजन आई आंसर आ गया. अब मुझे चैट बॉक्स में जल्दी से बताओ क्या आंसर होगा. हिम आंसर होगा, ही आंसर होगा, या दोनों ही गलत है, या दोनों ही सही है. क्विकली, कैन एनीवन सजेस्ट व्हाट शुड बी द आंसर नाउ. ठीक है, क्वेश्चन को मैंने चेंज कर दिया. सौम्या सेज हिम होना चाहिए, वत्सल सेज नो एरर. वत्सल यार, दो ऑप्शन मैंने दे रखे हैं, मैं ये पूछ रहा हूँ कि हिम होगा कि ही होगा, या दोनों ही रॉन्ग है या दोनों ही सही है. ठीक है, सो सौम्या सेड हिम होना चाहिए, ऑब्जेक्ट केस होना चाहिए. भाविका सेज हिम होना चाहिए, ऑब्जेक्ट केस होना चाहिए. वत्सल सेइंग कि यार नो एरर है. ठीक है, सिद्धि खंडेलवाल सेज हिम. ठीक है, श्रेयांश द एरर इज इन द प्रोनाउंस. ठीक है, तो अभी है ना, मैंने क्वेश्चन तुम्हारे लिए आसान कर दिया है. मैंने ना ये बता दिया कि यहाँ पे आंसर ना हिम या ही में से आएगा. ठीक है, तो तुम्हें बस ये बताना है कि हिम आ सकता है कि ही आ सकता है, या दोनों आ सकते हैं, या फिर दोनों ही गलत है. ठीक है, so Webber says both correct. Webber says both correct. Okay, so guys, this is an interesting question, right? So this is something that is one level ahead of the question that we just did. ठीक है, Vatsal Chaudhary also says both are possible. Okay, so guys, this is the answer. Okay, Vatsal has given the correct answer and Vaibhav Sharma has given the correct answer. So guys, this is the answer, both are correct. ठीक है, अभी बोथ का मैं फंडा तुम्हें समझाता हूँ. ठीक है, एंड इफ यू हैव एनी क्वेश्चंस प्लीज आस्क मी, क्योंकि ये क्वेश्चन ना बहुत आता है, और अगर आपको नहीं पता था कंसेप्ट तो शायद कंफ्यूज भी आप हो सकते हो. So let me explain, and if you have any questions, you can ask me. ठीक है, the answer is both are correct. The answer is both are correct, and this is how we solve it. Okay. So what did I say? I said similar cases are compared. That means if the comparison is with the subject, you compare it with subject case. If the comparison is with the object, you compare it with the object case. So that was the concept. Similar cases are to be compared. Okay, तो अभी आते हैं हम अपने केस पे. मुझे एक चीज बताओ, कंपैरिजन यहाँ पे राहुल से हो सकता है और मी से हो सकता है. So this is something that can be compared, and this is also something that can be compared. Do you know why? Because guys, you have to understand this, that this sentence can actually give me two meanings depending on the context. ठीक है, मैं यहाँ पे सब्जेक्ट के साथ कंपैरिजन कर सकता हूँ और मैं यहाँ पे ऑब्जेक्ट के साथ कंपैरिजन कर सकता हूँ. ठीक है, तो यू हैव दिस वर्ब लाइक्स. ठीक है, राहुल इज द सब्जेक्ट ऑफ द सेंटेंस, me is the object of the sentence, and these two options
both options can be compared either with the subject or with the object. अभी पता है क्या होगा, अभी पता है क्या होगा, क्योंकि यहाँ पे राहुल सब्जेक्ट है, तो अगर जब सब्जेक्ट के साथ कंपैरिजन होगा, तो सब्जेक्ट के साथ जब कंपैरिजन होगा तो आंसर ही आ जाएगा। यहाँ पे ऑब्जेक्ट मी है, जब ऑब्जेक्ट के साथ कंपैरिजन होगा तो यहाँ पे हिम आ जाएगा। तो एक्चुअली depending on how you look at this question, you can compare it with the subject, you can compare it with the object, okay, and the answer can be him if the comparison is with the object. If the comparison is with the subject, then the answer is he. Okay, so both options are possible. Now how is this question different from the previous wala question? Previous question में देखो क्या था, there was no object in the sentence. Look at this, Zia can sing better than me. Okay, so guys, what was happening, singing is the verb that is like है ना, that is intransitive, तो यहाँ पे मैंने कोई object नहीं लिया, तो comparison could only happen with this subject, ठीक है, क्योंकि यहाँ पे एक ही person है subject Zia, तो comparison was only happening with Zia, right? ठीक है, तो अभी Zia तो subject था, इसका मतलब यहाँ पे तो subject के ही आंसर आ रहा था, लेकिन यहाँ पे दो options हैं, because you have the subject and then you have a verb also. अब verb कैसा है, transitive verb है, ठीक है, अब इसमें object भी है, अब ऑब्जेक्ट भी है तो इसका मतलब ऑब्जेक्ट से भी कंपैरिजन पॉसिबल, सब्जेक्ट भी है तो सब्जेक्ट से भी कंपैरिजन पॉसिबल, सो ये दोनों पॉसिबल है, ठीक है, सो द आंसर इज बोथ आर करेक्ट। ठीक है, अभी तुम इसको याद कैसे रखोगे, हाउ यू कैन रिमेंबर दिस, व्हेनेवर यू हैव अ वर्ब, ओके, व्हिच इज फॉलोड बाय द ऑब्जेक्ट, ओके, एंड देन यू हैव अ चॉइस इन टर्म्स ऑफ प्रोनाउंस, ऑलवेज मार्क द आंसर बोथ आर करेक्ट, ठीक है, व्हेनेवर यू हैव अ वर्ब, ठीक है, सो कभी भी आप कोई वर्ब लेते हो, जैसे लाइक से आपने वर्ब लिया यहाँ पे, एंड देन यू हैव मेंशन्ड द ऑब्जेक्ट, okay, and then you have a choice in the pronouns, okay, mark both the options, okay, because both will be correct, okay। अब इसका एक मॉडिफाइड वर्जन में आपको और पूछता हूं, ठीक है, लेट्स सी हु कैन आंसर दिस वन, okay, let me modify it even more. Now if I say Zia likes cars more than me slash I, okay guys, now tell me कौन सा आंसर होगा, मी होगा कि आई होगा, या दोनों हो सकते हैं, दोनों ही नहीं हो सकते। I'm looking at the chat box. ओके, अगेन अ प्रोनाउन का क्वेश्चन, कंपैरिजन का डिस्कशन चल रहा है। फर्स्ट वाले केस के अंदर हमें समझ में आ गया था, सब्जेक्ट से कंपैरिजन था, सेकंड वाले केस में सब्जेक्ट ऑब्जेक्ट दोनों से कंपैरिजन था, तीसरे को मैंने और मॉडिफाई कर दिया, ठीक है। नाउ टेल मी द आंसर, ओके, वेरी नाइस, ओके, वत्सल करेक्ट आंसर, सिद्धिकर करेक्ट आंसर, okay, Puneet correct answer, Soumya Goel correct answer, Bhavika Chandwani correct answer, so perfect guys, I think many of you have heard of this concept, okay, that means because इतने लोगों ने आंसर सही किया है, भाविका करेक्ट आंसर, भूमिका करेक्ट आंसर, परफेक्ट परफेक्ट परफेक्ट, ओके, गुड 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 गुड, सिद्धि खंडेलवाल करेक्ट आंसर। तो यार इसका देखो फंडा बहुत सिंपल सा है, वी कैन सी दैट Zia is the subject, okay, likes is the verb, then comes the cars, that is the object, okay, then you have the comparison. Now the point is that you cannot compare a person to a car, it is not possible because they are unlike elements, ठीक है। तो अभी मेरे पास कार है, अभी कार तो नॉन लिविंग थिंग है, ठीक है, यू कैनॉट कंपेयर अ पर्सन टू अ कार, राइट, यू कैनॉट कंपेयर पर्सन टू अ कार, दिस इज समथिंग दैट इज नॉट अलाउड इन इंग्लिश, यू कैनॉट कंपेयर अनलाइक entities, so this is unlike, you cannot compare car with person, so that means this object wala option is ruled out, the only option that we can compare is actually Zia, and Zia is the subject, ठीक है। तो इसमें आंसर हो जाएगा Zia likes car more than I, जिसका एक्चुअली मीनिंग होगा Zia likes cars more than I do, ठीक है, विच का इसका मतलब कि जिया को कार्स ज्यादा पसंद है, जितनी मुझे पसंद है उससे भी ज्यादा पसंद है, लाइक आई ऑल्सो लाइक कार्स, जिया ऑल्सो लाइक्स कार्स, बट जिया का लाइकिंग फॉर कार्स इज लाइक मोर देन माई लाइकिंग फॉर कार्स, ठीक है। तो ये इसका मीनिंग आएगा दैट जिया लाइक्स कार्स मोर देन आई डू, दैट मीन्स आई ऑल्सो लाइक कार्स बट जिया लाइक्स कार्स मोर, ठीक है। ओके, सो गाइज यहाँ पे जो कंपैरिजन है ना वो सिर्फ सब्जेक्ट के साथ ही हो सकता है, बिकॉज सब्जेक्ट इज द ओनली लिविंग पर्सन, तो ऑब्जेक्ट के साथ पॉसिबल नहीं है, तो ऑब्जेक्ट वाला ऑप्शन रूल आउट कर दो, और अनलाइक एलिमेंट्स हो गए तो ऑब्वियसली ऑब्जेक्ट का आंसर आएगा नहीं, सब्जेक्ट का आंसर आएगा। ओके, प्रियल मेहता करेक्ट आंसर, वैभव शर्मा करेक्ट आंसर, परफेक्ट गाइज, ओके, सो आई होप यू गॉट दिस। ओके, मूविंग ऑन टू द नेक्स्ट क्वेश्चन, टेल मी द आंसर टू दिस वन। Okay, guys, I'm looking at the chat box. Quickly, let's see how many of you can handle this question. ठीक है, वैसे तो easy है, क्वेश्चन में कुछ है नहीं ज्यादा, बट लेट्स सी। ओके, ओके, वत्सल से सी ऑप्शन होगा, वत्सल से सी ऑप्शन होगा, अच्छा, ओके। हाँ जी गाइस, एनीवन एल्स, 30 सेकेंड्स।
In the actual exam, you get 30 seconds to answer such questions. You can just take a guess. क्योंकि अटेम्प्ट तो देखो करने पड़ेंगे, तो गेस मार लो. ठीक है भाई, एग्जाम के अंदर भी स्नैप का फंडा यही है, वहां पे भी गेस मारने पड़ेंगे अगर नहीं होता तो. ठीक है, नेगेटिव ज्यादा है नहीं. अच्छा, भाविका सेज बी ऑप्शन. ओके. Okay, so I can see a lot of B options. Bhavika Chandwani says B option. Lokendra says B option. Priyal Mehta says C option. Shreyansh Jangid says C option. Okay, Vatsal says C option. Okay, Vibhor Kulshresh says C option. Okay, guys, anyone else would like to answer this question? Okay, can I discuss? Shall we discuss? Okay, Bhumika Purohit says C option. Vaibhav says A option. Okay, so guys, the concept is very simple. Very simple concept. Okay, Bhumika, correct answer है Bhumika आपका. Absolutely correct. Very nice. Okay, so guys, the concept is very basic. ठीक है, मैं समझा देता हूँ. See, I can use neither and either. When I use neither and either as subject of the sentence. When I use neither or either as subject of the sentence. For that matter, when I use even each and every as the subject of the sentence, they are always followed by singular verbs. ठीक है, अब उसका रीजन पता है क्या होता है? Neither, either, each, every. These like all these like adjective, all these pronouns that we use, जब मैं subject की तरह use करता हूँ, it refers to any one of the two. अब neither का मतलब क्या है? You are referring to या तो first वाला या तो second वाला. So grammatically speaking, neither and either when they become the subject of the sentence, they actually act as singular entities. ठीक है. और एक चीज और ध्यान रखना कि जब नाइदर या यूज करोगे या आइदर यूज करोगे, तो हमेशा दो चीजों के लिए यूज होता है. यू कैन नॉट यूज दीज टर्म्स फॉर मोर देन वन, बिकॉज अ लॉट ऑफ टाइम्स वी आर कंफ्यूजिंग दिस आल्सो. ओके, नीदर का मतलब ना तो फर्स्ट वाला ना तो सेकंड वाला. ईदर का मतलब या तो फर्स्ट वाला या तो सेकंड वाला. ठीक है, सो एट वन पॉइंट ऑफ टाइम यू आर जस्ट पिकिंग अप वन एंटिटी. दैट मीन्स दैट दीज टर्म्स आर singular. Okay, so whenever you use these terms as subject of the sentence, always use a singular verb. तो गाइज यहाँ पे ये हैव प्लूरल वर्ब था. ठीक है, तो वेरी इजी क्वेश्चन, आपने उसको हैश कर दिया. ठीक है, हैव से हैश कर दिया. नाउ इट बिकम्स करेक्ट. ओके, सो दिस इज द आंसर. ओके, एंड कीप these terms in mind, neither, either, each, every. Whenever you use them in the sentence as subject of the sentence, always go for a singular main verb. बहुत basic है, very basic concept, but I thought that okay, I should take this question because a lot of us are like don't know this, right? ठीक है. Sure. Okay, so this is the concept, guys. You can have a look at this concept. It says neither and either always take singular verb when acting as the subject of the sentence. Here, neither is the subject and behaves like a singular noun. Okay, so we all know that. It requires a singular verb is. Similarly, either or either one is the subject and behaves like a singular noun. Okay, so whenever you pick up either or you go in for neither, or for that matter even each and every, whenever you make them subject of the sentence, they act as singular nouns, and when you use them as the subject of the sentence, the verb is always singular. Okay, so guys, I hope you got this, and let's move on to the next question. Okay, so tell me what should be the answer to this. Okay, I'm looking at the chat. Quickly tell me what should be the answer. Okay, Vatsal says C option. Okay, हाँ जी, क्या आंसर होना चाहिए? अभी डिस्कस किया ना अपन ने, कुछ तो भी कंसेप्ट वहीं से आएगा. ठीक है, लोकेन्द्र says B option. Okay, Bhavika says C option. Okay, guys, anyone else who would like to answer this question? Bhumika says C option. Priyal says C option. Siddhi Khandelwal says C option. Okay, should we discuss this? Okay, chalo. Vibhor says C option. Puneet Jangid says C option. Soumya Goel says C option. So guys, I think only 2-3 people have got this right. Okay, so Vaibhav Sharma. Okay, correct answer. Vaibhav Sharma का correct है. ठीक है. Then I can see लोकेंद्र राठौड़. ओके, लोकेंद्र राठौड़ का करेक्ट है. ठीक है, बाकी सी वाले के सबका रॉन्ग हो गया. अभी मैं रीजन बताता हूँ, देखो आपको क्या क्या प्रॉब्लम हुई. अभी आपने क्या सोचा कि नीदर आ रहा है ना, तो यहाँ पे इसको वॉश कर देते हैं, लेकिन गाइस एक चीज नहीं नोटिस किया आपने. What I just said is that neither and either can only be used for two things. You cannot use it for three houses. So what do you do now? You convert neither into none. Okay, look at this. When you have two things, two entities, and the choice or selection is between two things,
when the selection is of negative sort, I say neither x nor y. When the selection is like या तो फर्स्ट वाला या तो सेकंड वाला, देन आई से ईदर एक्स और वाई. ठीक है, अभी फॉर एग्जांपल जैसे मुझे कहना है कि यार लेट्स से आई लाइक ईदर सुजुकी और टोयोटा, या फिर मैं कह सकता हूँ आई लाइक नीदर सुजुकी नॉर टोयोटा, बट इन बोथ केसेस आई हैव ओनली टू थिंग्स. ओके, नीदर ऑफ द कार्स इज गुड, ईदर ऑफ द कार्स इज गुड. ठीक है, अगेन टू थिंग्स. So when you use either or neither, we only refer to two things. Okay, when you more than two, then replace neither with none and replace either with neither with none and either with any. ठीक है, तो अभी यार तुम्हारे पास अगर दो से ज्यादा एंटिटीज हैं, ठीक है, तो तुम्हें एक चीज ध्यान रखनी है कि क्वेश्चन में अगर मेंशन है कि दो से ज्यादा है, तो तुम उस इंफॉर्मेशन को चेंज कर नहीं सकते. थ्री हाउसेज तो थ्री हाउसेज ही रहेंगे. अब ऐसा तो है नहीं सो तुम टू कर दोगे, ठीक है, तो वो तो थ्री रहेगा. अभी तुम क्या करोगे? what will you do is that you will convert neither into none. ठीक है, और either जो है ना वो भी टू के लिए होता है, either को कन्वर्ट कर दो any में. ठीक है, और जैसे तुम कन्वर्ट करोगे ना तो फिर वो आपका मोर देन टू के लिए वैलिड हो जाएगा. ठीक है, द आंसर विल बिकम करेक्ट. द आंसर इज बी ऑप्शन. तो अभी ये परफेक्ट हो गया, बी ऑप्शन आंसर आ गया इसका. ठीक है, सिद्धि खंडेलवाल has given the correct answer and Vatsal Chaudhary again has given the correct answer. So guys, I hope you got this. Very important, if you have more than two things, then don't use either and neither. Convert neither into none and either into any. वेरी पॉपुलर क्वेश्चन, वेरी कॉमन क्वेश्चन, बहुत एग्जाम्स के अंदर आता है. ठीक है, और अगर नहीं पता था तो आई थिंक दिस इज समथिंग दैट वाज समथिंग न्यू फॉर यू. ओके, चलो, so let's move on to the next question. I hope you got this. Okay, so moving on to the next one. Right, okay, so guys, again you see this question and I'm looking at the chat box. Okay, so just tell me what is wrong in this sentence and then we discuss the concept. ठीक है, तो पहले देखते हैं कि भाई किस किस का करेक्ट होता है एंड देन वी लुक अप द कंसेप्ट. ठीक है, फिर देन वी विल सी व्हाट द कंसेप्ट इज. ओके ओके, अमित यादव से बी फाउंडेड होना चाहिए. ठीक है जी, और बताइए. ओके, सौम्या बी ऑप्शन, वत्सल बी ऑप्शन, अमित यादव बी ऑप्शन, भाविका बी ऑप्शन, पुनीत जहांगीर बी ऑप्शन, लोकेंद्र राठौड़ बी ऑप्शन, प्रियल मेहता बी ऑप्शन. ओके 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 ओके, ठीक है, ठीक 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 ठीक. ओके गाइज, all of you are correct. Okay, so let me tell you, Vatsal, Soumya, Amit, Bhavika, Puneet, Lokendra, Priyal, everyone has answered this question correctly. Okay, now let me tell you the reason, because I think some of you might not know the reason though the answer is correct. देखो आंसर पता है क्या, फाउंडेड नहीं होगा. सिंपल सा इसका रीजन है that you see this which. Now which is technically what we call as a relative pronoun. Now what are relative pronouns? The nature of a relative pronoun depends on the nature of noun it targets. ठीक है, so you have these relative pronouns in English: who, whom, which and that. ठीक है, so relative pronouns are neither singular nor plural. They can act as singular, they can act as plural. It depends on the antecedent. Okay, so अभी क्या करना है तुम्हें, just see what is the antecedent to this relative pronoun. So you can see that which is the relative pronoun. The antecedent is a noun. The antecedent to a pronoun is always a noun. Okay, so you can see this books. Books is basically the noun that is antecedent. तो भी books का nature कैसा है? What is the nature of the antecedent? The antecedent is plural. तो भी antecedent is plural, that means the verb that goes with which should also be plural. So यहाँ पे हो जाएगा verb. ठीक है, so guys, बहुत basic concept है. What you do is that whenever you find these relative pronouns, who, whom, which and that, and you're expected to choose a verb. Okay, your choice of verb will depend on the nature of noun that comes just before the given relative pronoun. ठीक है, तो relative pronoun से just पहले check कर लो क्या आ रहा है. ठीक है, so in this case we have books. Books is plural. That means that the antecedent of the relative pronoun is plural. That means I require a plural verb. That means the answer should be verb found. Okay, so guys, I hope you got this, and the answer is B option. This is one of those books which were found. Okay, moving on to the next question. Okay, so guys, again you can see on the screen a very conceptual question. Okay, single logic का question है. Let's see how many of you answer this correctly. Have a look. Okay, Lokendra says A option होगा. ठीक है, A option. Lokendra says A option. Guys, just give it a try. It's a question that involves only one concept of grammar. बहुत बहुत एक बड़ा बेसिक सा कंसेप्ट है. ठीक है, बेसिक सा कंसेप्ट है.
एंड वी हैव जस्ट डिस्कस्ड अ पार्ट ऑफ दैट कंसेप्ट। अभी अभी हम लोग डिस्कस करके आ रहे हैं, ठीक है। तो गाइस कोई भी मुश्किल क्वेश्चन नहीं है, ऑल दीज क्वेश्चंस आर बेसिक क्वेश्चंस, ओमेट लेवल के क्वेश्चंस हैं, ठीक है। तो ज्यादा दिमाग मत लगाओ, बस में देखो कि बेसिक क्या कंसेप्चुअल क्या कुछ गड़बड़ हो रही है क्या, ठीक है। वत्सल सेज डी ऑप्शन होगा, भाविका चंदवानी सेज बी ऑप्शन, सौम्या गोयल सेज बी ऑप्शन, ओके। देन आई कैन सी अ लॉट ऑफ डी 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 सी सी ऑप्शन, ओके। अमित सेज नो एरर, आई थिंक अमित यही कहना चाह रहे हो तुम। विभोर सेज ए ऑप्शन होगा, okay. So guys, let me tell you the answer. Bhavika Chandwani correct answer, Soumya Goyal correct answer. So guys, only two people have answered this question correctly. अभी ना तुम्हें एक चीज बताई थी मैंने, तुम लोगों ने ध्यान नहीं दिया, ठीक है। Guys, this question was a very basic level question, ठीक है। क्योंकि वही चीज मैंने कही, स्नैप में बेसिक क्वेश्चंस, तो कुछ नहीं करना है इसमें। अभी देखो कंसेप्ट देखना, बहुत सिंपल कंसेप्ट है, बहुत सिंपल कंसेप्ट है। अभी व्हाट डिड वी डिस्कस, दैट नीदर एंड ईदर आर सिंगुलर। व्हाट इज द सब्जेक्ट, सब्जेक्ट इज नीदर, नीदर इज एक्टिंग एज अ सिंगुलर नाउन, दैट मींस ये सिंगुलर है, सब्जेक्ट इज सिंगुलर। नाउ इफ यू हैव अ सिंगुलर सब्जेक्ट, व्हाट इज द नेचर ऑफ द वर्ब, द वर्ब एंड्स विद एस, ठीक है। तो यहाँ पे कंटेन आएगा कि कंटेन्स आएगा, contains आएगा obviously, because the subject is neither, and neither are singular, and because they're singular the verb should agree with the subject, that is subject of agreement, so the answer should be contains, answer is B option, ठीक है। अभी समझ में आ गया, बहुत सिंपल है, ठीक है। neither की जगह either होता, each होता, every होता, तो भी same case होता। you have to just go and check the main verb, okay। if you are using neither or either as the subject of the sentence, then guys you have to convert the main verb into singular। main verb का singular कैसे करोगे, वो जो आपके पास वर्ब है उसके एंडिंग में एस लगा दो, द मोमेंट यू ऐड एस इन द एंडिंग इट बिकम सिंगुलर वर्ब, ठीक है। बस आंसर आ गया बी ऑप्शन, ठीक है। दैट इज हाउ वी डू दीस क्वेश्चंस, बी ऑप्शन, ठीक है। सो गाइस वेरी बेसिक क्वेश्चंस, वेरी बेसिक क्वेश्चंस, ठीक है। कंसेप्चुअल क्वेश्चंस हैं सारे के सारे, ठीक है। और and I can see a lot of you are answering these questions, ठीक है। तो बस एक रिवीजन हो रहा है, ठीक है। सो दैट the good thing is that that like this is like giving you a lot of revision, okay। चलो, so I hope we understood this question. Moving on to the next one. Okay, guys, now we see a next question on the screen. Let's see how many of us answer this. Okay, okay, okay. Amit, okay. Amit says B option hoga. Okay, Soumya Goel says B option hoga. Real Mehta says B option. Vibhor says B option. Bhavika Chandwani says B option. Lokendra says A option. Bhumika Purohit says B option. Siddhi Garg says B option. Vatsal Chaudhary says B option. Okay, good. Puneet Janget says B option. Okay, perfect, guys, perfect. Okay, so the answer is B option, because it should not be an FIR, it should be an FIR. I will tell you the reason. Those of you who were not able to solve this question, अभी मैं आपको reason बताऊंगा, ठीक है, just wait for it. Okay, I think many of you have answered this question correctly. Okay, so this was one concept that I took yesterday also in the articles wala chapter. Okay, so that's good. I think most of you are already answering it correctly. Okay, I will tell you the concept. Okay, just wait for it. यहाँ पे क्या आंसर होगा, इज इट नो एरर और लाइक इज इट आल्सो एरोनियस? लुक एट दिस क्वेश्चन, ये वाला ठीक है क्या, या इसमें भी कुछ एरर है? व्हाट डू यू से, एसएमएस का क्या करें? आई एम लुकिंग एट दी चैट बॉक्स गाइस, इसमें क्या करना है? एन एसएमएस, ओके। अमित सेज एन एसएमएस होना चाहिए, ओके ओके। भाविका सेज बी ऑप्शन, सिद्धिगर सेज बी ऑप्शन, भूमिका पुरोहित सेज बी ऑप्शन, ओके, ठीक है। प्रियल सेज बी ऑप्शन, वेदांत सेज बी ऑप्शन, ओके। वत्सल चौधरी सेज बी ऑप्शन, ओके ओके। भूमिका says n होना चाहिए, सौम्या गोयल says B option, पुनीत जांगड़ says B option, okay। So guys, good, okay, the answer is NSMS, ठीक है। The answer is perfect, okay। Now those of you who haven't got these questions right, this is the logic, this is the concept. Look at these letters, F H L M N S R X, ठीक है। इन letters को observe करना, just observe these letters, just observe these letters, F H L M N S R X, ठीक है। अभी जब तुम इन लेटर्स को ना, when you use them in an abbreviation, when you use them in an abbreviation, okay, when you use them in an abbreviation, okay, we always use n with it। और उसका मैं रीजन बताता हूँ कि जब आप इसको एब्रीविएशन में यूज करते हो ना इन लेटर्स को, तो इनमें हमेशा ना एक ई का साउंड आता है, ठीक है। बिकॉज when you say f, it's not actually f, it's actually ef, okay। Similarly when you pronounce s, okay, the letter s, it's es, s, s,
Okay, so guys, बहुत simple concept है. Whenever you look at these letters that you can see on the screen and you use them independently, that means as abbreviations. अभी जिनको नहीं समझ में आ रहा इंडिपेंडेंट यूज का मतलब, तो एब्रीवेशन में क्या होता है, जैसे एसएमएस को मैं कैसे बोल रहा हूँ, एस एम एस, दैट मीन्स इंडिपेंडेंटली प्रोनाउंस कर रहा हूँ. एफ आई आर को मैं कैसे प्रोनाउंस कर रहा हूँ, एफ आई आर, दैट मीन्स आई एम इंडिपेंडेंटली प्रोनाउंसिंग इट. So you don't have to cram anything. You just have to remember that when these letters are pronounced as a part of abbreviation, okay, as a part of abbreviation, then the sound is always of E, and because of that E wala sound that comes with all the letters, we always use N with these abbreviations. तो कभी भी जब तुम इनको abbreviation में use करोगे तो आंख बंद करके N mark कर देना, you will always get the correct answer. ठीक है, because whenever you pronounce these letters, it always comes with the E का sound. ठीक है, so that is one thing. Second, when you use them in an acronym, now what is an acronym? For example, SEBI. Okay, now SEBI is not pronounced as SEBI. They are not independently pronounced. Guys, अगर आप acronym में use करते हो, when you use the same letters in an acronym, for example, SEBI, NATO, okay, then in that case the sound is not of a vowel, it's a sound of a consonant. And for obvious reasons, क्योंकि अभी क्या है कि आप इनको independently pronounce नहीं कर रहे. Now you are not pronouncing them independently. You are pronouncing them as a name. You are pronouncing them as a word, as a whole word, entire word. Okay. So when you pronounce them as an acronym, then always remember that it has a consonant sound, and by default all consonant sounds take a as the article. ठीक है, तो ये कंसेप्ट है. ठीक है, क्योंकि कई लोगों को ये पता नहीं होगा कंसेप्ट. ठीक है, एंड ऑब्वियसली यू कैन ऑलवेज टेक अ स्क्रीनशॉट एंड यू कैन गो थ्रू दिस कंसेप्ट अगेन, एंड दिस इज द कंसेप्ट. इट्स अ वेरी कॉमन, वेरी क्लीशेड क्वेश्चन, बहुत एग्जाम्स के अंदर आता है, इसलिए मैंने लिया. ठीक है, मुझे पता है कि भी काफी लोगों ने इसको आंसर भी कर दिया. ठीक है, लाइक आई थिंक मेनी ऑफ यू ऑलरेडी नो दिस. ओके, बट देन फॉर दोज ऑफ यू हु डोंट नो दिस इज गोइंग टू बी वेरी यूजफुल. ओके, सो गाइस आई थिंक ये समझ में आ गया. एक्रोनिम के अंदर अ लगाना है, ठीक है, एब्रीवेशन के अंदर एन लगाना है, और लेटर्स नोटिस कर लेना. ओके, चलो, नाइस. लेट्स मूव ऑन टू द नेक्स्ट वन. लेट्स मूव ऑन टू द नेक्स्ट क्वेश्चन. ओके गाइस, हियर कम्स द नेक्स्ट वन. ओके, वेरी कंसेप्चुअल क्वेश्चन. ओके, सो यार आंसर्स आने लग गए. Okay, so Harsh Tongia says B option hoga. Amit says okay. Guys, tell the answer. Tell the answer to this one. Vatsal says B option. Lokendra says D option. Okay. Vibhor says B option. B option. Okay. Bhavika says B option. Siddhigarh says C option. Siddhi Khandelwal says C option. Soumya says B option. Okay. Shreyansh Jangid says B option. Puneet Jangid says B option. Okay, okay, okay. So guys, I can see most people are answering either B option और C option. ठीक है, या तो B option लोग आंसर कर रहे हैं या फिर C option आंसर कर रहे हैं. ठीक है, okay. Priyal Mehta says B option. Puneet Jangid says B option. Okay, good, 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 good. Okay, very nice. चलो, so now let me take you to the answer. Now let me take you to the answer. Okay, I think now let's discuss. Okay, okay. So this is how it is. You are referring to Honey Singh, and then you are using two articles. So guys, when you refer to one person, okay, so these are the two designations, or these are the two titles for the same person. But now because you're referring to only one person, you have to use article only once. Okay, so it should be Honey Singh, a famous singer and skilled dancer. So when you refer to a person and you're referring to only one person, even when you refer to two designations or two titles of the same person, you use article only once. ठीक है, अभी मैं ना आपको एक क्वेश्चन बताता हूँ. जैसे मैंने आपसे कहा the MP and PM, the MP and PM has a right. ठीक है, एक सेकेंड सेंटेंस मैंने कहा the MP and the PM have a right. Okay, so if you look at these two sentences, the first one is the MP and PM has a right. I have used article only once. The second sentence is the MP and the PM have arrived. I have used article twice. So guys, what is the difference between these two sentences? Now, first of all, both are correct.
Both are correct. Both are correct. And the difference is this: in the first sentence, you are referring to one person because you have used article only once. Okay, absolutely, Amit. In the first sentence, the same person is the MP and the same person is the PM. Just like our question, Honey Singh is the same person who is the singer and he is also skilled dancer. So when you refer to the same person, don't use the article twice, use it only once. ठीक है, तो अभी यहाँ पे एक बार यूज किया मैंने, I've used definite article and obviously the verb is also singular. In the second sentence, I am referring to two different people. Second वाले sentence में I have two different people, two different individuals. Okay, so you have the MP. Okay, so that is the first person. Then you have the PM, that is the second person. And now you have two people. Okay, the MP and the PM. And because now you have two fellows. Okay, so the verb is plural. The answer is have. Okay, so the MP and the PM have arrived. So guys, दोनों ही सही हैं. The only thing is that you have to just check like whether you're referring to one person or referring to more than one person, two persons. ठीक है, टू पर्सन है तो फिर आप आर्टिकल को दो बार यूज करो. अदरवाइज इफ यू आर रेफरिंग टू द सेम पर्सन देन यूज आर्टिकल ओनली वंस. ओके. Okay, yes, Amit, you are absolutely correct. That is what the logic is. Okay, so guys, this is the logic, and I hope you got the answer. Moving on to the next question. Okay. Okay, Vatsal Chaudhary says D option. Okay, so Vatsal, you believe there is no error in the sentence? Good. Okay, Amit says A option. Okay, A hona chahiye. The president appointed a man. Okay. Siddhi Garg says C option. Okay. Guys, anyone else who can answer this question? हाँ जी, क्या आंसर होना चाहिए? Have a look at the question. Tell me what should be the answer. Siddhi Khandelwal says C option. Siddhi Khandelwal says C option. Bhumika C option. Bhavika Chandwani D option. Okay. Lokendra Rathod says D option. Okay, no error. Okay, so most people are answering D option and C option. ठीक है, A option नहीं सर, option B में man in place of the man. ठीक है जी. Okay, Bhavika Chandwani says C option. Okay, so guys, let me. Puneet Jangid also says C option. Okay, good, 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 good. So now let me take this for discussion. Okay, so guys, you have to understand this one concept that we call as the concept of complement. ठीक है, अभी जिसका ये गलत हुआ है मैं बताता हूँ आंसर क्या है. द आंसर इज सी ऑप्शन. ओके, द आंसर इज दैट यू डोंट नीड आर्टिकल द हियर. ठीक है, आपको द हटाना पड़ेगा. ठीक है, अभी कंसेप्ट क्या है मैं थोड़ा समझाता हूँ आपको. ठीक है, लेट मी एक्सप्लेन द कंसेप्ट एंड फॉर दैट यू हैव टू अंडरस्टैंड द मीनिंग ऑफ दिस टर्म कॉम्प्लीमेंट. नाउ व्हाट इज कॉम्प्लीमेंट? Complement is additional information. So when you call something a subject complement is nothing but extra information of the subject. When you call something object complement, it's nothing but extra information of the object. ठीक है, तो एक्चुअली होता क्या है सेंटेंस में, आपके पास सब्जेक्ट की इंफॉर्मेशन जो होती है एक्स्ट्रा, वो सब्जेक्ट कॉम्प्लीमेंट होती है. द एक्स्ट्रा इंफॉर्मेशन ऑफ द ऑब्जेक्ट इज कॉल्ड एज ऑब्जेक्ट कॉम्प्लीमेंट, राइट? नाउ इफ यू लुक एट दिस सेंटेंस, टेल मी समथिंग. You look at the sentence. Tell me something. Man and head of the reputed company. Are they same fellows or are they two different fellows? ये जो दोनों बंदे हैं, the man and head of the reputed company, are they same fellows or are they different fellows? Obviously they are same people. ठीक है, तो basically बंदा तो यहाँ पे एक ही है ना. You have the man and you have the head of the company. ठीक है, so they are the same fellows. Absolutely, yes, Amit. They are the same person. They are the same fellows. So actually, this is the object. And technically speaking, this is nothing but object ka extension. This is object complement. Because what is an object complement? An object complement is nothing but some extra information about the object. So guys, this is the rule that when you have object and the object complement, you don't need the article twice. You need article only once. Okay. So in this case, man and head of the reputed company were one and the same person because they were the same people. Okay, you don't need article twice, you need it only once. And obviously because you need it only once, तो आपका जो आंसर है वो C option हो जाएगा because now you have to remove this the in this sentence. Okay, so the answer is option C. Okay,
Now if you have understood this concept, if you people have got this concept, okay, and let me tell you, you have this word appointed. This is a monotransitive verb, that means it takes only one object, ठीक है। तो मेरे पास यहाँ पे जो पर्सन आ रहा है, उस पर्सन के बाद में जो इंफॉर्मेशन है ना, वो दूसरा ऑब्जेक्ट नहीं है, इट्स जस्ट द कॉम्प्लीमेंट ऑफ द ऑब्जेक्ट, एंड कॉम्प्लीमेंट ऑफ द ऑब्जेक्ट इज द सेम, इज द सेम पर्सन, ओके। ओके, डू वी यूज एज विद द अपॉइंट? नहीं, वत्सल कभी अपन अपॉइंट के साथ ना एज यूज नहीं करते। वी ऑलवेज से ही वाज अपॉइंटेड द सेक्रेटरी, ही वाज अपॉइंटेड द प्रेसिडेंट। Okay. Do you mean to say that the man who is the head of the company? Yes, the man is the head of the company. Absolutely. I mean, that is exactly what I want to say. That the man and the head is the one and the same person. And because they are one and the same person, okay, you need article only once. Okay. So B option में article आ गया ना? That is enough. You don't need article दूसरा वाला. So that is the reason why the C option is the answer. Now, guys, if you have understood this concept, ठीक है? अभी ये concept मैंने समझा, अगर तुम्हें समझ में आ गया तो, ठीक है? तो next question पे आते हैं. You tell me the answer to that one. Okay. Look at this. Okay, and I will again take you to the concept. ठीक है, अभी इस क्वेश्चन को भी देखो। Okay, अभी इस क्वेश्चन को भी देखो। I gave the boy the responsibility of the case. I gave the boy the responsibility of the case. Okay, guys, tell me what is the answer to this question. I gave the boy the responsibility of the case. ठीक है, कंसेप्ट समझ में आ गया तो ये क्वेश्चन ट्राई करो, बट लेट मी वार्न यू दैट दिस क्वेश्चन इज अ स्लाइटली बेटर क्वेश्चन, ठीक है, क्योंकि मैंने इसमें कुछ दिमाग वाला कुछ चीज लगाया है इसके अंदर, ठीक है। ओके, सो आई कैन सी वत्सल चौधरी सेज बी ऑप्शन, सिद्धिकर सेज बी ऑप्शन, भाविका सेज डी ऑप्शन, ओके भाविका गुड, सौम्या सेज बी ऑप्शन, सिद्धि खंडेलवाल सेज बी ऑप्शन, ओके, तो सबका आंसर बी 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 आ रहा है, ठीक है, एवरीवन इज आंसरिंग बी ऑप्शन बी ऑप्शन बी ऑप्शन बी ऑप्शन बी ऑप्शन। सो गाइस, नाउ लेट मी टेल यू दैट यहाँ पे जो आंसर है ना, वो नो एरर है, ठीक है। अभी देखो, अभी इसमें लॉजिक क्या हो गया, अभी देखो लॉजिक क्या हो गया इसके अंदर, अभी पता है क्या है फंडा। यू हैव टू अंडरस्टैंड वन थिंग, gave is a ditransitive verb. Ditransitive verbs are those verbs that can take two objects, ठीक है। अब चीज देखना, एक मुझे एक चीज बताओ, यहाँ पे gave आ रहा है, so one object is this object boy, the second object is the object second, that is responsibility। अब मुझे तुम एक चीज बताओ, boy and responsibility are one and the same thing क्या? अभी बॉय और रिस्पॉन्सिबिलिटी सेम चीज है क्या? ठीक है, लाइक द प्रीवियस क्वेश्चन दैट वी हैड, लाइक इन द प्रीवियस क्वेश्चन मैन एंड हेड ऑफ द रेप्यूटेड कंपनी वर वन एंड द सेम थिंग, दैट मींस आई नीडेड ओनली आर्टिकल वंस। अभी तुम यहाँ पे इस क्वेश्चन पे आओ, नाउ यू टेल मी, इज इट लाइक द बॉय एंड रिस्पॉन्सिबिलिटी आर वन एंड द सेम थिंग? ऑब्वियसली यू वुड से कि नहीं यार, दोनों अलग अलग चीजें हैं। बॉय इज अ डिफरेंट एंटिटी, responsibility is a different entity, responsibility is not an extension of the boy, responsibility is object second, boy is the object one, that means in this case you have two objects, one is the boy and the other is the responsibility। और तुम्हें पता कैसे चलेगा, तुम बस ये चेक कर लेना कि दोनों सेम है कि दोनों अलग अलग है। अगर दोनों अलग अलग है ना, ठीक है, लाइक फॉर एग्जांपल इन दिस केस बॉय इज डिफरेंट फ्रॉम रिस्पॉन्सिबिलिटी, देन यू यूज आर्टिकल ट्वाइस। अगर दोनों सेम है ना, तो आर्टिकल सिर्फ फर्स्ट वाले के साथ आएगा, ठीक है। सो गाइज, ये फंडा था इसका। इन दिस केस boy is not the same thing as responsibility. Boy is one thing, that is object one, and responsibility is the other thing, that is object second. Boy and responsibility are two different entities, okay, they are two different objects of the verb gave, and gave in itself is a ditransitive verb, it can take two objects, ठीक है। तो अभी ना ये सेंटेंस सही है बिल्कुल, ठीक है, because you have two objects and both can take their respective articles, both can take their respective articles, ठीक है। तो अभी मैं ना तुम्हें थ्योरी बता रहा हूँ, ठीक है। नाउ आई एम गोइंग टू टेक यू थ्योरी का स्लाइड, you read that theory and even then you have confusion, then you can ask me, right? So guys, this is the theory for this. Okay, so guys, look at the theory. The first question was the president appointed the man the head of the reputed company. Okay, so first वाले में क्या था? First wala was wrong because remove the second the, because both man and head are the same person. So in the first question, man and head were the same person. So when you have two titles but the person is same, you use article once. तो हमने इस वाले केस के अंदर obviously हमने the हटा दिया था, ठीक है। So it became the president appointed the man head of the reputed company, ठीक है। Now where did this case happen? कहाँ कहाँ पे होता है केस? ये तीन words में आता है। You have nominated, then you have elected, and then you have appointed, ठीक है, ठीक है। अपॉइंटेड, मेड, इलेक्टेड, इन सारे केसेस के अंदर। ओके, अच्छा एक चीज ये हो सकती है,
that you can have two objects, जो अभी मैंने आपको दिखाया था जिसमें अपना verb जो था ना वो आपका क्या था, ठीक है, then the second वाला, ठीक है, give, ठीक है, so this was the verb, okay, give, okay, give का second form, ठीक है, तो यहाँ पे ना give is basically a ditransitive verb, ditransitive verb मतलब that it can take two objects, ठीक है, तो यहाँ पे two objects आएंगे, अभी object one भी आएगा, object two भी आएगा, that means यहाँ पे two articles are possible, ठीक है, अभी इन verbs के अंदर ना you will always have an object and an object complement, ठीक है, कौन कौन से verbs में, nominated, elected, made और appointed, इन सारे केसेस में ना बस ऊपर वाले की तरह होगा, ये जो प्रेसिडेंट अपॉइंटेड द मैन हेड ऑफ द रेप्यूटेड कंपनी, दैट मींस यू नीड ओनली वंस, यू नीड द आर्टिकल ओनली वंस, ठीक है, ओके, सो शॉर्ट में ये चार पांच वर्ड ध्यान रख लो, इन वर्ड्स में से अगर कोई क्वेश्चन आता है ना तो उसमें आर्टिकल सिर्फ एक बार यूज करना, क्योंकि जो सेकंड वाली नाउन होगी ना वो मेन ऑब्जेक्ट की कॉम्प्लीमेंट होगी, दो अलग अलग चीजें नहीं होंगी, ठीक है, सो नॉमिनेटेड, इलेक्टेड, मेड, अपॉइंटेड, ठीक है, ओके, चलो, moving on to the next question. Okay, so guys, I hope you got this. Okay, so this is the next question. Many a clever student have lost interest in studies due to lack of facilities. Many a clever student have lost interest in studies due to lack of facilities. What do you think should be the answer? Okay, Harsh says C option, Siddhi says A option, Puneet Jangit says A option. Okay, guys, any other answers that you have? Okay, Vibhor says B option, Vaibhav says A option. ठीक है, ठीक है, ठीक है. ओके, सो कई लोग नाउन्स को भी चेंज कर रहे हैं, जो अपना जो सब्जेक्ट है वो भी चेंज हो रहा है, अच्छा, ओके, 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 चलो, लेट मी टेक दिस फॉर डिस्कशन. Okay, so let me tell you how many of you have answered this question correctly. Okay, Vibhor, correct answer. Vibhor, correct answer. Soumya Goel, correct answer. Lokendra Rathod, correct answer. Okay, so three people have answered this question correctly. Soumya, correct. Lokendra, correct. Okay, and Vibhor, correct. Okay, so guys, let me explain this. So this many are singular. First thing, ये singular है भाई. ठीक है, so this is basically a determiner that determines the clever student. Okay, like so this is like the modifier, noun modifier. ठीक है, सिंगुलर होता है, सिंगुलर होता है, मैनिया का मतलब यू आर टॉकिंग अबाउट मोर देन वन, बट देन द ट्रीटमेंट ऑफ मैनिया इज एज अ सिंगुलर एंटिटी. तो गाइस इसका फंडा देखो, पता है क्या है, जब आप मैनिया यूज करते हो ना तो द नाउन एज वेल एज द वर्ब गो सिंगुलर. ओके, सो रिमेंबर दिस. फॉर एग्जांपल, look at this sentence, look at this sentence, guys. Many a student has applied for cat. Now guys, this sentence is perfect, ये बिल्कुल सही है. Many a student has applied for CAT. So what you have to keep in mind that whenever you use many a in a sentence, the noun as well as the verb are singular. So the noun is singular and the verb is also singular. So noun is singular and the verb both. Okay, so noun is singular and the verb both are singular. Okay, so many a student has applied for CAT. Okay, so ये आपका noun भी singular है और verb भी singular है, because many a by nature is always singular. ठीक है, so यहाँ पे ये noun तो singular था student, so no problem in that. But let's come here. Look at the verb वाला part. Now verb was have, so you have to convert it into singular. It becomes many a clever student has lost interest in studies due to lack of facilities. Right. So this is the answer. That is C option. Now let me show you the theory part. Okay, so this is the theory. Now when I use many a or n, it's a more formal expression than the single word many. And when I use many a, I have to ensure that it takes a singular noun and I have to also ensure that it takes a singular verb. Look at these sentences. It remained a mystery for many a year. Many a year. I never say many a years. It's many a year. I have been there many a time. Many a politician has promised. So guys, look at this. Many a politician has promised. Has promised. Okay, so you can see that the noun is singular. ठीक है, many अगर noun भी singular है और verb भी आपका singular है.
ठीक है. So you have to just check that when I use many are in a sentence, then I have to ensure that the noun as well as the verb both, okay, are to be kept singular. Okay. सिद्धि क्लेवर तो आपका ना एडजेक्टिव होता है. ओके, क्लेवर तो एडजेक्टिव होता है. क्लेवर के लिए कभी भी आर्टिकल नहीं आता. आप ना क्लेवर के साथ कोई नाउन लिखते हो, उस नाउन के लिए आर्टिकल आता है. ठीक है. लेकिन एक चीज ध्यान रखना, जो प्रोनाउंसिएशन है ना, वो एडजेक्टिव के हिसाब से भी डिसाइड हो सकता है. ठीक है, क्योंकि जो प्रोनाउंसिएशन है वो आपके फर्स्ट लेटर ऑफ द वर्ड का आता है. ठीक है. तो जो तुम सोच रहे हो ना क्लेवर अनकाउंटेबल है, तो क्लेवर तो एक एडजेक्टिव है. ठीक है, उसका तो कोई लेना देना ही नहीं है. ठीक है. आई होप आई आंसर्ड योर क्वेश्चन, राइट. ठीक है, क्लेवर से कोई लेना देना नहीं है. यू हैव टू सी कि क्लेवर के साथ जो पर्सन मेंशन हो रहा है वो एक है बंदा या एक से ज्यादा है, उसके हिसाब से आप डिसाइड करोगे. ओके, चलो. Look at this. Unless he gets 18, he wouldn't get a license. Okay, so Lokendra says B option होगा answer. ठीक है. Nice. What should be the answer? Very conceptual question. Let's see. Okay, Bhavika Chandwani says A option होना चाहिए. सौम्या गोयल says A option होगा. ठीक है. Vibhor says A option. Okay. Vatsal says A option. Okay. Anyone else? Last 10 seconds and then we take this for discussion. Okay, Siddhi says A option. Bhumika Purohit A option. Priyal Mehta A option. Okay, so guys, all of you are correct. Bhavika correct answer, Soumya correct answer, Vibhor's correct answer, Vatsal correct answer, Siddhi correct answer, Bhumika correct answer, Priyal Mehta correct answer. It should be until. It should be until. Okay, until he gets 18, he wouldn't get a license, and we'll discuss the reason, right? Okay, so the answer is until, and the answer is obviously A option. Okay, the answer is until, unless की जगह until आएगा. ठीक है, I will tell you the reason. Look at the next question. Look at the next question. We will not do it until we have money. We will not do it until we have money. What is the answer to this one? We will not do it until we have money, guys. What should be the answer to this one? Okay, B option. Okay. Vedant says B option. Bhavika says B option. Bhumika says B option. Soumya Goel says B option. Okay, okay, okay. Okay. Vedant says B option. Okay. Lokendra says B option. Vibhor says B option. D option, sorry. Okay. Chalo, guys. So I think 8 people have answered this correctly. Puneet correct answer, Vedant correct answer, Bhavika correct answer, Bhumika correct answer, Soumya Goel correct answer, Vedant correct answer, Lokendra Rathod correct answer. Okay. Siddhi A नहीं होगा, it should be B option. Okay, I will tell you why. देखो अभी यहाँ पे ना क्या है, you should use until नहीं use होगा, यहाँ पे unless use होगा. Okay, so now those of you who don't understand the difference between unless and until, okay, now let me take you the theory part. ठीक है, बाकी आंसर्स तुम लोगों ने करेक्ट दिए हैं, यहाँ पे बी ऑप्शन ही आंसर है, until की जगह it should be unless. Okay, and what is the reason, what is the concept, what is the reason? Web of the answer is B option. Until की जगह it should be unless. Okay, it should be unless. Now guys, this is one confusion a lot of people have, that where to use unless and where to use until. Okay, so now let me take you to the slide where we understand this difference between until and unless. Okay, so let's see. Okay, so this is the answer. Unless refers to a condition that should be fulfilled in order for the action to happen. So guys, this is a choice. So when you say unless, unless का मतलब होता है कि भाई मेरे पास एक choice है, अगर ये option होता है पूरा तो मैं ये काम करूंगा. ठीक है, जैसे आपने कहा कि भाई मुझे जब मनी मिलेगा तो ही मैं वर्क करूंगा. सो मैं क्या बोलूंगा, आई विल नॉट वर्क अनलेस आई गेट मनी. Okay, because this is the condition. This is the condition. Okay, unless refers to the condition that should be fulfilled in order for the action to happen. Okay, so this is the condition. Until refers to a point of time, until that point of time is reached and the given action will not happen. Until का फंडा ना ये नहीं होता कि condition होती है. Until एक point of time होता है. ठीक है. Until एक point of time होता है, जब तक वो point of time reach नहीं होता ना, तब तक वो काम नहीं हो सकता. ठीक है. Okay. अब जैसे मैंने कहा कि यार मैं सेशन तब तक स्टार्ट नहीं करूंगा जब तक 7 नहीं बज जाते. मैंने आपसे कहा मैं सेशन तब तक स्टार्ट नहीं करूंगा जब तक 7 नहीं बज जाते, तो मैं क्या बोलूंगा, आई विल नॉट स्टार्ट दी सेशन अंटिल इट इज 7. ओके, तो यहाँ पे पॉइंट ऑफ टाइम की बात हो रही है. ठीक है, और अगर मैं कहता हूँ कि भाई मैं काम तब तक नहीं करूंगा जब तक मुझे आप मनी नहीं देते, तो मैं क्या बोलूंगा, आई विल नॉट डू दिस वर्क अनलेस आई हैव मनी. तो अनलेस इज अ कंडीशन, अंटिल इज अ पॉइंट ऑफ टाइम.
नाउ लेट्स सी, ये क्वेश्चन थे हमारे दोनों, ठीक है। अनलेस ही गेट्स 18, तो यार ये कोई कंडीशन थोड़ी है, उसके हाथ में थोड़ी कि वो 18 का होगा कि नहीं होगा, वो तो होगा। दिस इज बेसिकली अ पॉइंट ऑफ टाइम। अब वो उसको प्रिवेंट नहीं कर सकता, क्योंकि जब कंडीशन होती है ना, तो आपके या किसी और पर्सन पे डिपेंड करता है कि वो सिचुएशन को कंट्रोल कर सकता है, ठीक है। बट पॉइंट ऑफ टाइम नो वन कैन कंट्रोल। नाउ कैन यू रियली कंट्रोल दिस, दैट वेदर और नॉट यू विल बिकम 18? ऑब्वियसली नॉट। सो दिस इज बेसिकली अ पॉइंट ऑफ टाइम, ठीक है। सो अभी पॉइंट ऑफ टाइम है, पॉइंट ऑफ टाइम को आप कंट्रोल नहीं कर सकते, सो दिस इज गोइंग टू बी द अंटिल, राइट। ओके, श्रेयांश, जनरली यार वो रिडंडेंसी वाली सिचुएशन हो जाती है ऐसा। जनरली आपके ना टिपिकल एग्जाम्स के अंदर तो कोई सिचुएशन आपको ऐसा देंगे नहीं, ठीक है। ओके, अब मुझे नहीं पता कि उसको सही मानते हैं ग्रामेटिकली कि नहीं मानते, आई हैव नेवर रिसर्च, ओके। बट देन आई हैव नेवर सीन अ क्वेश्चन वेयर दे कैन कंबाइन बोथ द सिचुएशंस इनटू वन। इट मे बी पॉसिबल, ठीक है, कि आप अंटिल का कंटेक्स्ट और अनलेस का कंटेक्स्ट दोनों को एक में कंबाइन कर दो और दोनों बोल दो, ठीक है। बट आई डोंट थिंक लाइक इट्स रिक्वायर्ड और इट्स इवन करेक्ट, ठीक है। यहाँ पे देखो फंडा क्या है, वी विल नॉट डू इट अनलेस वी हैव मनी। नाउ दिस इज अ सिचुएशन दैट यू कैन कंट्रोल, दिस इज बेसिकली अ कंडीशन, इट्स नॉट अ पॉइंट ऑफ टाइम कि भैया पैसा दे भी सकता है, पैसा नहीं भी दे सकता, ठीक है। अगर पैसा देगा तो कर देंगे, नहीं देगा तो नहीं करेंगे। सो विल नॉट डू दिस अनलेस वी हैव मनी। Okay, so guys, I think you got this. Okay, so you can look at the theory. Unless he gets 18, so obviously this is not something that you can control, so it should be until he gets 18. The second one was we will not do it until we have money, so obviously this is a situation that can be controlled and that can be rectified or that can be modified. Okay, so this should be unless, because obviously this is a choice that you always have. So the person can give money, the person may not give money. Okay, so this should be unless. Okay, and always remember one thing, that whenever you use unless or until, you don't use until, you don't use negative not after that, ठीक है। तो थर्ड सेंटेंस में एक्चुअली वही एग्जांपल है, unless he doesn't complain he will not get help. Now guys, unless is already negative, you cannot use doesn't after it, because it becomes a case of double negative. तो तुम्हें ध्यान रखना है कि अगर तुमने unless सेंटेंस में पहले यूज कर लिया, तो उसके बाद में कोई भी नॉट यूज मत करना, ठीक है। डोंट यूज नॉट, बिकॉज unless in itself is a negative. Okay, because when you say unless he doesn't complain, that means जब तक वो complain नहीं करता, ठीक है। So you have already conveyed the negative वाला aspect, so you don't use not after that. Okay, so once unless is already employed, then you don't need not after that. Okay, so that is, chalo, let's move on to the, okay, so we are reaching the last few questions. Let's see who can answer this one. Okay, so this is the sentence: you are looking very pretty today in your new dress. Very plain sentence. Let's see who can tell me the answer to this question. Okay, Vatsal says B option. Okay, Bhavika says B option. Okay, guys, anyone else would like to answer this question? Haji, anyone else who would like to try this one? Lokendra says B option. Okay, so Vatsal B option, Bhavika B option, Lokendra B option, Shreyansh Jangit C option, Puneet Jangit B option, Soumya Goel C option. Okay, so I can see many people are answering C option and some people are also answering B option. Okay, so C option काफी सारे आ रहे हैं. Puneet C option, Soumya C option, Bhumika C option, Puneet Jangit C option, Vaibhav C option, Prachi Vats C option. ठीक है. Okay, Bhavika Chandwani C option, Nishtha Singhal C option. Okay, so guys, let me tell you the answer. Actually, B option जो है आपका वही आंसर है. This is the answer. B option. Okay. See. Okay. These are the people who have answered this question correctly. Puneet correct answer. Lokendra correct answer. Bhavika Chandwani correct answer. Vatsal Chaudhary correct answer. So guys, 4 people have answered this question correctly. Okay. And those of you who haven't answered this question correctly, let me tell you the logic. So look at the breakup of the sentence. अब इसको ना breakup को observe करना, फिर मैं concept बताऊंगा बहुत important. Okay, उस concept को ध्यान रखना. Okay. So guys, this is how it is. देखो, in this sentence you have the subject you have the helping verb are, you have continuous tense का verb looking. So this is the main verb and this is continuous tense. So this is continuous tense. ठीक है. And then you have very pretty, which is basically adjective, and apart from being the adjective, it's also the subject complement. ठीक है. Subject complement क्यों है? क्योंकि technically यहाँ पे जो verb है ना, ये linking verb है. This is a linking verb actually. ठीक है.
Okay, so linking verb links the subject to its complement. In this case, the complement is basically an adjective. ठीक है, अब यहाँ पे जो मुद्दे की बात है ना वो मैं आपको बताता हूँ, जो आपके काम की बात है. Okay, this verb look is a non-continuous verb. Guys, it's a non-continuous verb. You cannot convert this into an ing form when it's used as a verb. वापस से रिपीट कर रहा हूँ. Look is a verb that is non-continuous. Technically speaking, it's a linking verb. It links the subject to its complement. And when you have a verb like know, look, appear, they are non-continuous verbs. Non-continuous verbs का guys फंडा ये होता है कि you cannot convert it into ing form as long as it's a verb. ठीक है, you can always make a gerund out of it. ठीक है, आप उसको noun बना सकते हो, but जब आप उसको verb की तरह use करते हो, जब ना तुम उसको वर्ब की तरह यूज करते हो, व्हेन यू यूज इट एज अ वर्ब, यू कैन नॉट मेक द आईएनजी फॉर्म ऑफ अ नॉन कॉन्टिन्यूअस वर्ब. ठीक है. ओके, एंड गाइस दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट. नाउ वन क्वेश्चन दैट विल कम इन द माइंड ऑफ मेनी पीपल कि यार और कौन कौन से वर्ब्स हैं, व्हाट आर द अदर वर्ब्स व्हिच आर नॉन कॉन्टिन्यूअस. ओके, तो गाइस फॉर वन ऑल द लिंकिंग वर्ब्स आर टेक्निकली नॉन कॉन्टिन्यूअस. ठीक है, ऑल दी वर्ब्स ऑफ फीलिंग्स वगैरह की जो वर्ब्स होती हैं, ठीक है, वो नॉन कॉन्टिन्यूअस होती है. ठीक है, अभी मैं आपको एक लिस्ट दिखा रहा हूँ. I'm showing you a list and you just have a good look at the list and you will realize that okay, these verbs cannot be used with ing form because they are non-continuous. Okay, so let's have a look at the list. ठीक है, ये सारे verbs हैं. ठीक है, ये सारे verbs हैं. So these are the verbs. Okay, see, touch, smell. Okay, so verbs of senses, verbs of feeling, verbs of mental process, verbs that show appearance. ठीक है, appearance के अंदर like you're looking good, you're seeming good, you're appearing good, you're resembling. Okay, sometimes we say like he's resembling Shah Rukh Khan. No, that is wrong. He resembles Shah Rukh Khan. Okay, verbs of communication. Okay, and you can have a look at this list. ठीक है, अभी ये list है, इसका screenshot आप ले सकते हो. Let me tell you the most important thing. Whenever guys you have a non-continuous tense का verb, never write it in ing form. What you can do with an with a non-continuous verb is that you can put it in either the indefinite form or you can put it in the perfect form. ठीक है, तो तुम उसका ना या तो indefinite tense बना लो. ठीक है, तो you can use present indefinite, past indefinite, है ना, ऐसे. ठीक है, or you can use it in the perfect tense. You can make it present perfect, past perfect, future perfect, like that. Okay, but never use these verbs in ing form. Okay, right. ओके, सो गाइस दी जो जो आपका ना देखो, अभी यहाँ पे ना एक चीज है जो अभी किसी स्टूडेंट ने पूछा अभी कि एक्सेप्शंस वाला जो फंडा है ना वो क्या होता है. ठीक है, तो एक्सेप्शंस में सब में नहीं जा रहा मैं, लेकिन मैं एक एक्सेप्शन आपको बता देता हूँ. जैसे सपोज करो मैंने आपको एक वर्ड दिया. ठीक है, नाउ लेट मी टेल यू द एक्सेप्शंस आल्सो. ओके वत्सल, तुम्हें उस एक्सेप्शन वाले से ना फंडा पता चल जाएगा. एक्सेप्शंस में मैं इसलिए नहीं जा रहा बिकॉज आई डोंट वांट टू मेक द थिंग्स कंफ्यूजिंग, बट देन बिकॉज अभी एक बच्चे ने क्वेश्चन पूछा है लुकिंग फॉर माय फ्रेंड, तो ये गलत है कि सही है, क्योंकि यहाँ पे ना लुकिंग का मतलब देखना नहीं है, यहाँ पर मतलब है सर्च करना. ठीक है, तो यार इंग्लिश में ना ये बड़ा एक फंडा है. आपके ना एक ही वर्ड के मल्टीपल मीनिंग्स होते हैं, और एक वर्ड के जब मल्टीपल मीनिंग्स होते हैं ना तो वो मीनिंग्स के हिसाब से फिर नेचर चेंज होता है. तो एक लुक का तो मतलब होता है देखना. ठीक है, like I'm you're looking good, no that is wrong, because जो देखने वाला मीनिंग है ना वो आईएनजी फॉर्म में नॉन कॉन्टिन्यूअस होता है, और एक होता है सर्च वाला मीनिंग. ठीक है. ठीक है, अभी जो सर्च वाला मीनिंग है ना उसमें आईएनजी फॉर्म लग सकता है. ठीक है, फॉर एग्जाम्पल आई एम लुकिंग फॉर माई फ्रेंड, नाउ दैट इज करेक्ट, बिकॉज वहां पे जो मीनिंग है ना वो अपीयरेंस वाला नहीं है. इट डज नॉट मीन दैट यू लुक गुड. ओके, दैट मीन्स यू आर लुकिंग फॉर अ फ्रेंड, दैट मीन्स यू आर सर्चिंग. Now let me tell you a very interesting example and that will help you to understand the idea of how certain examples can create confusion. So look at this verb have. Now have, technically speaking, is a verb that is linking and non-continuous. ठीक है, अभी आप बुक्स में पढ़ोगे तो ये लिंकिंग वर्ब होती है हैव, और ये नॉन कॉन्टिन्यूअस होती है. इसका मतलब ये हुआ दैट यू कैन नॉट मेक आईएनजी फॉर्म ऑफ इट. एब्सोल्युटली परफेक्ट. ठीक है, अभी मैंने एक सेंटेंस दिया, अमिताभ बच्चन इज हैविंग अ बीएमडब्ल्यू. ठीक है, तो आप बोलोगे कि यार ये तो गलत है. क्यों गलत है? क्योंकि भाई हैविंग जो है, ठीक है, विच मीन्स टू पोजेस, इज बेसिकली अ वर्ब दैट इज नॉन कॉन्टिन्यूअस. तो मैं इसको कट कर दूंगा, मैं बोल दूंगा अमिताभ बच्चन हैज अ बीएमडब्ल्यू. राइट, वेरी सिंपल. ठीक है, अब देखो अभी फंडा क्या है, क्यों कंफ्यूजन होता है. ठीक है, एंड देयर इज ऑलवेज अ रीजन इन और लॉजिक इन ग्रामर. अभी देखो क्या होता है कि जो ये हैव है ना इसका एक दूसरा मीनिंग और भी होता है. ठीक है, जैसे मैंने आपसे कहा आई एम हैविंग लंच.
right? Now in this case, I'm having lunch. The meaning of the verb have is to eat. The meaning is not to possess. अभी तो फंडा क्या है, जो possess वाला मीनिंग है ना, वो तो नॉन कॉन्टिन्यूअस है, वो तो नॉन कॉन्टिन्यूअस है, ठीक है, लेकिन जो ईटिंग वाला मीनिंग है ना, वो कॉन्टिन्यूअस है, ठीक है, क्योंकि possession is something that is a state, and when you have a state, this is basically intransitive. Intransitive का हिंदी में मतलब होता है जिसमें कोई एक्शन शो नहीं होता, और जो ईटिंग है ना, वो अपने आप में एक एक्शन है. एक्शन का मतलब इट्स अ ट्रांजिटिव वर्ब, दैट मींस एनी ट्रांजिटिव वर्ब कैन बी पुट इन आईएनजी फॉर्म. सो जो आई एम हैविंग लंच में जो मीनिंग है ना, वो ईटिंग वाला है. तो गाइस, व्हाट आई एम ट्राइंग टू टेल यू हियर इज दैट इज हाउ समटाइम्स वी कैन गेट कंफ्यूज्ड, ठीक है. तो यहाँ पे जो मीनिंग से चेंज हो गए. अभी लुक का मीनिंग है एक तो कि दिखना, ठीक है. मैंने आपसे कहा कि यार तुम बहुत अच्छे लग रहे हो आज, ठीक है, सो आई वुड से यू लुक गुड. बट देन अभी मैंने कहा सर्च कर रहा हूं मैं किसी को, तो वहां पे आईएनजी आ जाएगा. आई एम लुकिंग फॉर माय फ्रेंड, वहां पे तो आईएनजी आ जाएगा क्योंकि मीनिंग चेंज हो गया ना. सिमिलरली यू लुक एट दी वर्ब अपीयर, ठीक है. अभी ये मैंने लिस्ट के अंदर अपीयर एक वर्ब डाला था, तो एक स्टूडेंट ने मेरे से पूछा कि सर अपीयर को आपने कहा कि भाई नॉन कॉन्टिन्यूअस होता है, तो एब्सोल्युटली नॉन कॉन्टिन्यूअस होता है. इफ आई से you are appearing confident, right? Now that is wrong, because in this case the meaning of the word appear is just like look. You're looking confident, ठीक है, आप confident लग रहे हो, appear कर रहे हो, मतलब like you're looking confident, right? So it should be non-continuous, it should be you appear confident, ठीक है. बट appear का एक दूसरा मीनिंग भी होता है, जैसे मैंने आपसे कहा आई एम appearing for cat, ठीक है. सो नाउ हियर द मीनिंग इज दैट आई एम राइटिंग कैट. यहाँ पे लगने वाला मीनिंग नहीं है, यहाँ पे इट्स नॉट लाइक यू आर लुकिंग गुड वाला मीनिंग नहीं है, यू लुक गुड वाला कि दिख रहे हो, ठीक है, वो मीनिंग नहीं है. इट सिंपली मीन्स दैट आई एम राइटिंग कैट. एंड यहाँ पे क्योंकि राइटिंग वाला मीनिंग हो गया, तो अभी कॉन्टिन्यूअस है, ठीक है. सो हैव अ लुक एट दी स्लाइड, have a look at the slide. Okay, once we are done with the session, go through the slide, and there may be exceptions, but मैं exceptions में obviously यार for obvious reasons इसलिए नहीं जा रहा क्योंकि I want to make the things as simple as possible, because see my area of interest is to make things simple, ठीक है. तो जितना मैं simple रख सकता हूँ मैं उतना simple रखूंगा, but अगर कोई question है तो you can always ask me, and I hope those of you who had this question got the answer, right? ठीक है, अभी आते हैं देखो अपन इस लास्ट क्वेश्चन पे. आई थिंक दिस इज द लास्ट वन. यस, ओके, सो लेट मी कम टू दिस वन क्वेश्चन, लास्ट क्वेश्चन, and let's see who can answer this. I'm having this car for the last 10 years. Now I plan to buy a new one. अभी तुम मेरा इसका आंसर तो मुझे बता दोगे, खैर वो तो छोड़ो, तुम मुझे बस ये बता दो, ठीक है, यहाँ पे ए ऑप्शन का रिप्लेसमेंट क्या होगा, क्योंकि आंसर तो अभी तुम्हें समझ में आ गया. Because have has the meaning of possession. In a possession wala sense, have is a non-continuous verb. Because it's a non-continuous verb, obviously you know the answer, right? ठीक है, तो इसमें ऑप्शन ए ही आंसर है, ठीक है. अभी इतना मैंने समझाया तो आंसर तो तुम्हें समझ में आ गया होगा कि यहाँ पे हैविंग द कार नहीं होगा, ठीक है, कुछ और होगा. अब मेरा क्वेश्चन ये है कि आई वांट टू रिप्लेस द ए वाला ऑप्शन विद समथिंग करेक्ट, ओके, एंड आई वांट यू टू आंसर मी व्हाट शुड बी द रिप्लेसमेंट फॉर ए ऑप्शन. ओके, क्विकली गाइस, हु कैन टेल मी द रिप्लेसमेंट फॉर दैट? पुनीत सेज हैव होना चाहिए, ठीक है. Guys, tell me the replacement for A option. A is the answer. Okay, Bhavika Chandwani says I have had this car. Okay. Okay, Siddhi Garg says had hona chahiye. Okay, Vibhor Kulshresh says that I have this car. Puneet says had this car. Okay. Okay. Haji, guys, anyone else? क्योंकि ये क्वेश्चन बड़ा इंटरेस्टिंग है. लाइक आई हैव टेकन दिस इन लाइक वन ऑफ द सेशंस. ओके, सो लेट्स सी. वैभव अगेन सेज हैड होना चाहिए. श्रीराज जांगीर सेज हैड होना चाहिए. सो गाइस, मोस्ट ऑफ यू आर एक्चुअली आंसरिंग कि यहाँ पे जो रिप्लेसमेंट होगा ना, वो हैव होगा या तो हैड होगा. बट लेट मी टेल यू, ओनली 2 पीपल हैव आंसर्ड दिस क्वेश्चन करेक्टली. वन इज भाविका चंदवानी. Okay, Bhavika Chandwani, perfect answer, and Vatsal Chaudhary has also answered the question correctly. So guys, question का जो आंसर है ना यहाँ पे, ठीक है, वो आंसर तो आपका यही होगा, have had, ठीक है. The answer to this question is I have had this car for the last 10 years, but now I'm planning to buy the new one. Okay. And anyone who is interested, I can tell you the logic to this question, क्योंकि ये question fill in the blanks में आ सकता है, ऐसा कोई question, and I will try to make it as simple as possible. And if you don't understand, you can always put that down in the message box. Okay, so guys, this is the funda. See, what happens when I use when I use have had. Okay, this actually means have owned.
ठीक है, which is basically what you call as present perfect. अभी प्रेजेंट परफेक्ट टेंस का देखो फंडा क्या रहता है. इन अ प्रेजेंट परफेक्ट tense, in the present perfect tense you have as the helping verb, and then you have the third form of the main verb, and this is how the present perfect looks like. This is how present perfect looks like. ठीक है, अभी प्रेजेंट परफेक्ट कहाँ यूज होता है? इट इज यूज्ड इन मेनी सिचुएशंस. वन ऑफ देम इज recent completion of an action, and it's also used for those situations where the timing of the action is complete but the action is still on. ठीक है, मतलब ये हुआ कि अगर आपका कोई एक्शन है, वो एक सर्टेन टाइम तक के लिए खत्म हो गया है, बट वो एक्शन अभी चल रहा है. ठीक है, जैसे अभी मैंने आपसे पूछा कि यार तुमने कितने आवर्स पढ़ाई कर ली, आपने कहा कि सर 2 घंटे तो पढ़ाई कर ली लेकिन अभी भी पढ़ाई कर रहा हूँ. ठीक है, सो यू कैन से, ठीक है, आई हैव स्टडीड फॉर 2 आवर्स. अब यहाँ पे ना कई लोग कंफ्यूजन ये होता है दैट व्हेन यू से आई हैव स्टडीड फॉर 2 आवर्स तो उनको लगता है कि एक्शन खत्म हो गया. ठीक है, but let me tell you, if you are under this impression that I have studied for 2 hours means that the action is complete, guys, you are wrong. I have studied for 2 hours का मीनिंग ये होता है कि 2 आवर्स कंप्लीट हो गए लेकिन एक्शन अभी भी चल रहा है. ओके, और ये चीज मैं ना आपको टेंसेस में और डिटेल में बता दूंगा, बट लेट मी टेल यू समथिंग. प्रेजेंट परफेक्ट इज यूज्ड इन ऑल दो सिचुएशंस वेयर you have an action that is complete for a certain time but the action is still going on. ठीक है, तो एक्शन ना कुछ टाइम के लिए कंप्लीट हो गया. ठीक है, जैसे आपने कहा कि 2 घंटे की पढ़ाई हो गई लेकिन पढ़ाई अभी भी चल रही है, तो यू कैन से आई हैव स्टडीड फॉर 2 आवर्स. ठीक है, नाउ व्हेन यू टॉक अबाउट सच अ कंटेक्स्ट, when you talk about such a context where the action is complete for a certain time frame but the action is still going on, you use present perfect or you use present perfect continuous. But present perfect can also be used and present perfect continuous can also be used. तो present perfect भी use हो सकता है. So when you say I have studied for 2 hours, it simply means that I have studied for 2 hours and like the study will still go on. ठीक है, अभी क्या होता है कि जो ये ऐसी वर्ब्स होती है ना, ठीक है, जिनके अंदर आपका नॉन कॉन्टिन्यूअस वर्ब का फंडा आ जाता है, जैसे कि हैव इज नॉन कॉन्टिन्यूअस. इनके साथ फंडा ये होता है कि इनको प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस में अपन कन्वर्ट कर नहीं सकते. वो इसलिए कन्वर्ट नहीं कर सकते क्योंकि हैव का ना आईएनजी फॉर्म बनेगा नहीं, बिकॉज आईएनजी फॉर्म तो सिर्फ उन वर्ब्स का बन सकता है जो ट्रांजिटिव वर्ब्स होती है. तो अभी इनका अपन क्या करें, क्योंकि गाइस यहाँ पे पता है सिचुएशन क्या आ गई, यहाँ पे सिचुएशन ये आ गई कि इस बंदे के पास 10 ईयर से कार है. ओके, 10 ईयर्स तक कार है, अभी मतलब 10 ईयर्स कंप्लीट हो गए. 10 ईयर्स कंप्लीट हो गए लेकिन अभी 10 ईयर्स के बाद भी उसके पास कार है. क्यों? क्योंकि अभी तो सोच रहा है ना कि वो अभी नई कार खरीदेगा. दैट मीन्स ही हैज नॉट परचेज्ड इट, राइट? ही हैज नॉट परचेज्ड इट, ही जस्ट थिंकिंग अबाउट यार अभी मैं खरीदूंगा. दैट मीन्स कि 10 ईयर्स का टाइम फ्रेम कंप्लीट हो गया. ठीक है, 10 ईयर्स का टाइम फ्रेम कंप्लीट हो गया और अभी आगे भी उसके पास कार रहेगी. ठीक है, तो अभी सिचुएशन तो वही आ गई कि 10 ईयर्स का टाइम फ्रेम खत्म हो गया लेकिन काम तो अभी भी चल रहा है. लाइक यू स्टिल हैव द कार, राइट? यू स्टिल हैव द कार. ओके, सो अभी अपन क्या करें? अभी आप कहोगे कि सर इसको एक काम करते हैं, इसको प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस में डाल देते हैं. ठीक है, क्योंकि प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस भी वही चीज कैप्चर करता है. ठीक है, लाइक द टाइम फ्रेम इज ओवर बट द एक्शन इज स्टिल ऑन. ओके, सो आई कैन से आई एम हैविंग दिस कार फॉर द लास्ट 10 ईयर्स, तो उसको मैंने प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस में डाल दिया. ठीक है, मैंने बोल दिया आई हैव बीन हैविंग दिस कार. ओके, बट वहां पे एक प्रॉब्लम आ जाएगी कि हैव तो नॉन कॉन्टिन्यूअस वर्ब है, so it cannot go in present perfect continuous. Now there's only one option left. Now there's only one option left that can still capture the meaning that the action is complete for 10 years but the action of owning the car is still going on. कि 10 साल तक तो ओन कर लिया लेकिन अभी 10 साल के बाद भी ओनरशिप चल रही है, क्योंकि अभी तो तुमने प्लान किया कि नहीं खरीदोगे लेकिन अभी खरीदा नहीं है. ठीक है, सो the only option that you are now left with is to use present perfect. ठीक है, so अभी present perfect अपन यूज करेंगे, so what will happen? This is the helping verb. ठीक है, and the synonym of own is to have something, like I have a car, I own a car. एक बात है, तो main verb कौन सा है? had. ठीक है, so this is basically your main verb, this is the helping verb, and what you see in this sentence have had is basically present perfect. Present perfect क्यों? क्योंकि have तो helping verb हो गया और had जो है ना वो main verb have का third form है. ठीक है, so have had is basically present perfect. And why am I using present perfect? Because the situation is such that you have owned the car for 20 years, you have owned the car for 10 years, but the ownership is still going on. And in order to capture such a context where you have something that you own for certain time frame and like it still goes on, okay, you need present perfect. Okay, and this is something that is very very important for all the non-continuous tense का verbs. जैसे मैंने आपसे कहा कि मैं आपको 10 साल से जानता हूँ, so I will say I have known you for 10 years. I have known you for 10 years. तो गाइज मतलब क्या है इसका?
कि 10 ईयर्स तक तो मैं आपको जानता हूँ और 10 ईयर्स के आगे भी जानता हूँ, लेकिन अभी 10 ईयर्स तक का टाइम फ्रेम कंप्लीट हो गया, ठीक है, तो भूला मैं आपको 10 ईयर्स के बाद भी नहीं, बट 10 ईयर्स का फ्रेम कंप्लीट हो गया. ओके, सो आई थिंक you got this concept. Okay, and this is the answer. The answer is A option. ठीक है, so originally the question was कि answer क्या होगा, but then obviously I told you the logic, so like I modified it a bit, right? So guys, that will be all for today's session, and let me complete the session, and like if you have any questions you can type in the chat box. Okay, so let me complete it with some messages and then we end this session. Okay, so I hope ये आपने download कर लिया. अच्छा, अभी मैं what will I do is that in the previous वाला session I've left me profile link in the comment box, so you can always go and check those sessions. If you have not downloaded the app, you can download the app. Okay, and obviously you have to follow me on that, right? And I will leave the link in the comment box, तो तुम चाहो तो उसमें sessions देख सकते हो. Okay, so you can have a look at the sessions, and tomorrow I have a session at 10:30, but then like it's going to be on the app. Okay, so if you follow me, you can attend that session. It's going to be on tenses. You can do that. And if you take a plus subscription, if you are not taking plus subscription, any of your acquaintances or friends is taking a plus subscription. Okay, so you can always ask that person to use my code HSync. So that will obviously help me. Okay, so if you think that my sessions have added some value, okay, the free content that I have provided has added some value, so this is one code that you can do. ठीक है, तो ये तुम यूज कर सकते हो. बाकी रेफरल कोड है, अगर अदरवाइज तुम फ्री भी उसमें डाउनलोड करोगे तो भी यू कैन यूज दिस कोड टू एक्सेस माय सेशन, राइट? ठीक है, सो दैट्स इट. ओके, सो आज के लिए इतना ही करते हैं, एंड आई विल सी यू इन द नेक्स्ट सेशन. ओके, थैंक यू वेरी मच, एंड सी यू इन द नेक्स्ट सेशन. ओके गाइस.